सभासदों, माननीय उप सभापति जी। Message from Lok Sabha, Secretary General. Sir, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha, at its sitting held on the 12th of August 2025, has adopted the following motion regarding extension of time for presentation of the report of the Joint Committee of the Houses on the Constitution 129th Amendment Bill 2024 and the Union Territory Laws Amendment Bill 2024, that this House do extend time for the presentation of the report of the Joint Committee on the Constitution 129th Amendment Bill 2024 and the Union Territory Laws Amendment Bill 2024 up to the first day of last week of the winter session 2025. Honorable Minister Dr. Monsoon Session. Honorable Minister. चेयरमैन सर, आज नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल और नेशनल एंटी डोपिंग अमेंडमेंट बिल, दो बिल का एक साथ में मैं मेरा विचार प्रस्तुत करता हूं। और माननीय चेयरमैन साहब, हम सब लोग जानते हैं। One second, Honorable Minister. Honorable LOP. सर, सभी विपक्षी दल के लोग एसआईआर का मुद्दा उठाए और इसमें नहीं सभी उठाए और सरकार इसको रेस्पॉन्ड करे, क्योंकि इसमें दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक इनको बहुत से मेंबर को छोड़ा जा रहा है। मेरा एक विनंती है आपसे, जो जिससे लाखों वोट काटे जा रहे हैं, अगर पार्लियामेंट को जिंदा रखना है, लोकतंत्र को जिंदा रखना है, तो आपको इस पर चर्चा के लिए परमिशन देना चाहिए। अगर आप नहीं देते तो मैं समझूंगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो। सब लोग Thank you. नो, अरे सुनो, मेरे को जब परमिशन दी है मैं बात करता हूँ। सर, मैं यही चाहता हूँ कि हम सभी लोग ये कोशिश कर रहे हैं। अरे आप लोग इसमें क्या अनकॉन्स्टिट्यूशन बात कर रहा हूँ, मैं तो यही बात कर रहा हूँ कि इसका सबसे ज्यादा असर गरीब, दलित, आदिवासी, ओबीसी समाज के दूसरे मार्जिनलाइज्ड सेक्शन पर पड़ेगा। बिहार से एसआईआर की शुरुआत है, अब बंगाल, आसाम, पूरे देश में यही एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। थैंक यू हमारे पिछले कुछ दिनों से ये स्पष्ट मांग रही है कि एसआईआर पर चर्चा हो। विपक्ष चाहते हैं सदन चले, सभी जरूरी मुद्दों पर चर्चा हो, लेकिन बीजेपी सरकार नहीं चाहती है। और ये नहीं, ये हमेशा चोरी करके सत्ता में आए। चोरी की सरकार है। Honorable LOH. सर, Order in the House, please. Order in the House. Please sit down. Order in the House, please. Order in the House. Order in the House, please. Order in the House. If you want to leave, leave quietly. Please leave quietly. There's no point of order on the bill. Not point of order in the bill. Honorable LOH. Please, Honorable LOH. Please, let's have order in the House. Let the bill start. Please, thank you. Honorable LOH. सर, Thank you. मैंने पहले कहा था कि Please, order in the House. Please.
ये जो ऑपोजिशन का व्यवहार है, ये Please, order in the house. Order in the house. Order in the house. Yes, please. ये जो ऑपोजिशन का व्यवहार है वो स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट उसको ऑब्स्ट्रक्ट करने का एक सोची समझी चाल है और इनको हेल्दी डेमोक्रेसी में कोई विश्वास नहीं है। हमने शुरू दिन में कहा था, जो मैं आज फिर रिपीट करता हूं, कि जुलाई 21 को हमने कहा था कि यह गवर्नमेंट किसी भी तरीके से हम हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो संविधान सम्मत होना चाहिए, वो नियमों के अनुसार होना चाहिए। अभी लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन उन्होंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर का विषय उठाया और पॉइंट ऑफ ऑर्डर के विषय में उन्होंने कोई चर्चा नहीं की। चर्चा उन्होंने एसआईआर के बारे में शुरू कर दी और एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट लेकर के आए। मैं निवेदन करूंगा कि वह हाउस के प्रोसीडिंग से एक्सपंज किया जाए। क्योंकि दैट इज नॉट इन ऑर्डर ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द पार्लियामेंट। जिस बात के लिए उन्होंने परमिशन मांगी थी उस बात को छोड़ करके वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने लगे और टाइम एंड अगेन उन्होंने इस पर डिमांड 267 रूल के दिन हर दिन करते हैं सुबह, और उनको हर दिन यह जवाब दे दिया जाता है कि इसकी चर्चा नहीं हो सकती है। ये जो आज हम बिल पर चर्चा कर रहे हैं, ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में डिसाइड होने के बाद हम कर रहे हैं और इसको ऑब्स्ट्रक्ट करना ये प्रजातंत्र को एक तरीके से पार्लियामेंट को बंधक बनाने के बराबर है, जो मैंने कल भी कहा, और ये हम परमिट नहीं करेंगे। वी विल नॉट अलाउ ऑब्स्ट्रक्शनिज्म, वी विल नॉट अलाउ अनार्किज्म, और गवर्नमेंट के जो बिजनेस है वो पूरा पारित होगा और यह संसद चलेगी, पूरी तरीके से चलेगी, नियमावली के तहत चलेगी और आपके संरक्षण में चलेगी। Honorable members, as your Honorable LOH. They have wasted 64 hours and 25 minutes of the Indian Rajya Sabha. जब से पार्लियामेंट 64 hours and 25 minutes. आप बोलिए वर्किंग डेज, ये आप बोलिए ये हाउस को बंधक बनाने के बराबर है कि नहीं है? ये एक तरीके से पब्लिक मनी को वेस्ट करने का सवाल है कि नहीं है? और इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि डिबेट हो, इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि डिस्कशन हो, इनको इंटरेस्ट ये है कि सिर्फ मीडिया में कुछ लाइनें आ जाए और उसके लिए पॉइंट ऑफ ऑर्डर के माध्यम से ये बात को कहना चाहते हैं। मैं फिर कहूंगा दैट शुड बी एक्सपंज्ड। Honorable members, regarding notices 267, Honorable Deputy Chairman in the morning has already given his ruling. So therefore, those matters under notice 267 are not held cognizable. As regards matters that were raised that is not part of the bill has already been introduced by the Honorable Minister. He had started his introduction. Therefore, any matters that do not pertain to the specific bill under consideration of this House do not form part of the record. I've given my ruling. Honorable Minister. सर, आज राज्यसभा में नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल्स और नेशनल एंटी डोपिंग अमेंडमेंट बिल, दो विषय पर एक साथ में हम चर्चा करना चाहेंगे। और डिप्टी चेयरमैन सर, स्पोर्ट्स एक पब्लिक मूवमेंट है और स्पोर्ट्स के लिए 3 स्टेक होल्डर है, एक एथलीट, दूसरा फेडरेशन और तीसरा गवर्नमेंट। ये तीनों के बीच में तालमेल हो, ये तीनों का काम सुनिश्चित हो, ट्रांसपेरेंसी से हो, देश के हर युवा उसमें स्पोर्ट्स की टैलेंट को मेडल में कन्वर्ट करने की उसको अपॉर्चुनिटी मिले। स्पोर्ट्स ये नेशन प्राइड भी होता है, स्पोर्ट्स स्टेट सब्जेक्ट भी है, स्पोर्ट्स नेशनल सब्जेक्ट भी है और स्पोर्ट्स इंटरनेशनल सब्जेक्ट भी है। और सालों से देश में एक लॉ के रूप में एक स्पोर्ट्स बिल आए और स्पोर्ट्स बिल पारित करके हम एक अच्छा लॉ बनाए जो नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स सेक्टर में और दुनिया में एक भारत की अच्छी छवि बनाए। चेयरमैन सर, ये विषय बहुत पुराना है,
देश में स्पोर्ट्स सेक्टर में गुड गवर्नेंस होना चाहिए, देश में स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाना चाहिए। उसके लिए बात तो बहुत हुई, लेकिन काम नहीं हुआ था। काम नहीं होने का भी कारण इच्छा शक्ति का अभाव था। अपना अपना हित उसमें समाहित थे और स्पोर्ट्स सेक्टर में कई ऐसे पॉलिटिक्स हुए जिस वजह से स्पोर्ट्स में हम गुड गवर्नेंस नहीं ले पाए। डिप्टी चेयरमैन सर, ये देश में क्षमता की कमी नहीं है, ये देश में ब्रेन पावर भी है, ये देश में मैन पावर भी है। देश की 65% पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवाओं का देश है। लेकिन आज ओलंपिक्स में मेडल टैली में हम पीछे पड़ रहे हैं। हम मेडल टैली में और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में जो हमें परफॉर्मेंस करना चाहिए हमें नहीं कर पा रहे, और इसलिए देश में एक लॉ लाना बहुत आवश्यक है। हम क्यों लॉ ला एक ये बिल लेके आए हैं? देश में फेडरेशन का इलेक्शन, फेडरेशन में एथलीट का सिलेक्शन, फेडरेशन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व, फेडरेशन में नए लोगों को अपॉर्चुनिटी देना, ऐसे कई टाइप के विषय है। उसके लिए ट्रांसपेरेंसी होना बहुत आवश्यक है। आज मैं देखता हूं देश में 350 से अधिक कोर्ट केस है। फेडरेशन में इलेक्शन हुआ, कोर्ट में चला गया, कोर्ट ने उसमें एडमिनिस्ट्रेटर रख दिया, और जब फेडरेशन में डिस्प्यूट होता है तब एथलीट का भविष्य अनिश्चित हो जाता है, उसके पर बुरा प्रभाव होता है। ऐसे 350 से अधिक कैसे इलेक्शन होना है? इलेक्शन स्टेज पर, रिजल्ट स्टेज पर, इलेक्शन के प्रारंभिक स्टेज पर बार बार कोर्ट मैटर हो जाती है। मैं देखता हूं वर्तमान समय में, पिछले 1 साल से मैं भारत सरकार के स्पोर्ट्स मिनिस्टर के रूप में देख रहा हूं, लीगल पैरालाइसिस की स्थिति है। देश में बॉडी में कितना मेंबर होंगे? कई फेडरेशन में कई ज्यादा मेंबर हो जाता है, कई फेडरेशन में कम मेंबर होता है, और एथलीट 50% हमारी महिला है। ये महिला को प्रतिनिधित्व मिलना बहुत आवश्यक है, और कई महिला खेलती है, उसका कोई प्रश्न होता है, उसका कोई इश्यू होता है, उसको एड्रेस करने के लिए एथलीट कमीशन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना बहुत आवश्यक है। ऐसी कई टाइप की सिचुएशंस आज हमारे सामने है जो हमें स्पोर्ट्स सेक्टर में आगे बढ़ाने में बाधा आ रही है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें आने वाले 10 साल में देश को स्पोर्ट्स सेक्टर में दुनिया में 1 से 10 क्रम में लाना है। हमें जब देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो, यानी कि देश आजादी का 100 वर्ष मनाए, हमें विकसित भारत बनना है। विकसित भारत केवल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को मोदी जी ने नहीं कहा है। मोदी जी ने कहा है कि देश सर्वांगीण क्षेत्र में उन्नति करे। स्पोर्ट्स सेक्टर में भी हम दुनिया में 1 से 5 नंबर के मेडल टैली में आना चाहते हैं। उसके लिए स्पोर्ट्स सेक्टर में गुड गवर्नेंस ये बहुत आवश्यक है। और आज दुनिया में मोदी जी ने कहा है कि हर स्थिति में हमें वर्ल्ड क्लास बनना है। हमें दुनिया में जो रूल्स रेगुलेशन है, दुनिया में जिस टाइप का गवर्नेंस है, ऐसा गवर्नेंस हमारे देश में भी होना चाहिए। आज दुनिया में 20 देशों में स्पोर्ट्स लॉ है, हमारे देश में नहीं था। मैं संसद से माननीय सदस्यगण को रिक्वेस्ट करूंगा, लोकसभा ने पारित करा है, जब राज्यसभा बिल को पारित कर देंगे तो हम 21वें कंट्री बनेंगे जिसमें स्पोर्ट्स लॉ हो और लॉ के मुताबिक हमारे देश में गुड गवर्नेंस चलता हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके लिए बात होती रही जैसे मैंने बताया, लेकिन इच्छा शक्ति का अभाव से हम उसको बिल में, लॉ में कन्वर्ट नहीं करें। सबसे पहले 1975 में ये देश में स्पोर्ट्स के लिए गाइडलाइन बनाई, और एक गाइडलाइन के मुताबिक स्पोर्ट्स गवर्नेंस होता था। 1985 में पहली बार, 1985 में, यानी कि आज से 30 साल पहले एक प्रयास हुआ, एक स्पोर्ट्स बिल का ड्राफ्ट बना, बट आगे नहीं बढ़ पाएगा। 2011 में एक स्पोर्ट्स कोड बनाया गया, वो भी कोर्ट में चैलेंज हो गए, उसके पर कोई नतीजा नहीं निकला। 2011 में उसको एक बार कोशिश करी गई कि हम स्पोर्ट्स बिल को कैबिनेट में लाए, लेकिन कैबिनेट तक नहीं पहुंच पाया था। 2013 में यहां अजय माकन जी नहीं है, लेकिन मैं उसका उल्लेख इसलिए करूंगा, उन्होंने कोशिश करी थी
स्पोर्ट्स बिल लाने की। उन्होंने मेहनत करी, कैबिनेट तक ले गए, लेकिन कैबिनेट में कई सदस्यों ने उसको सहयोग नहीं करा और कैबिनेट से बिल को डिफर होना पड़ा, क्योंकि स्पोर्ट्स सेक्टर से जुड़े हुए लोग और उनकी दरमियानगिरी से ये बिल कैबिनेट से पारित नहीं हुआ था। और उनके बाद 2017 में एक नया स्पोर्ट्स कोड तो ड्राफ्ट करा गया, उसको भी कोर्ट में चैलेंज करा गया और 2019 में एक कोर्ट की कमेटी ने उसके ऊपर डिटेल अध्ययन करने के लिए कहा, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाया। अंतोगत्वा 2022 में कोर्ट की दरमियानगिरी से 13 पॉइंट का एक स्पोर्ट्स कोड तैयार करा गया। ये स्पोर्ट्स कोड के तहत आज स्पोर्ट्स गवर्नेंस हो रहा है, लेकिन मोदी जी की इच्छा शक्ति का ये परिणाम है। मोदी जी ने कहा कि हमें स्पोर्ट्स सेक्टर में आगे बढ़ने के लिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करने की आवश्यकता है और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करें, हम एक के बाद एक सीक्वेंस में करें। जब आज से 11 साल पहले मोदी जी ने जब से देश के प्रधानमंत्री के रूप में काम करना चालू करा, स्पोर्ट्स की एक इकोसिस्टम क्रिएट करने के लिए देश में खेलो इंडिया नीति लाया। खेलो इंडिया कार्यक्रम से आज देश में स्पोर्ट्स एक मूवमेंट बनी। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया पारा गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, खेलो इंडिया અને કેવડિયા ખાતે યોજાનાર છે એની તૈયારીઓ પણ ગુજરાતે શરૂ કરી દીધી છે। સરદાર પટેલ એન્કલેવ જે મોટેરા સ્ટેડિયમ ખાતે આવેલું છે ત્યાં આગળ ગુજરાત ક્રિકેટ એસોસિએશનના પ્રમુખ આ દેશના ગૃહમંત્રી અમિતભાઈ શાહ હતા ત્યારે 800 કરોડના ખર્ચે વિશ્વનું સૌથી મોટું 1,30,00,000 પ્રેક્ષકો મેચ જોઈ શકે એવું મોટેરા સ્ટેડિયમ નરેન્દ્ર મોદીના નામથી બનાવવામાં આવ્યું છે। એ ઉપરાંત તાજેતરમાં જ અમિતભાઈ શાહ જે મત વિસ્તારમાંથી લોકસભાના સભ્ય થયેલા છે તે નારાયણપુરામાં વીર સાવરકર સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ 734 કરોડના ખર્ચે ખેલો ઇન્ડિયા થીમ સેન્ટર બનાવેલ છે કે જેના કારણે આવનારા દિવસોમાં ખેલાડીઓને જરૂરી તમામ સ્પોર્ટ્સની સુવિધા મળી રહે એ દ્રષ્ટિને ધ્યાનમાં રાખીને જ્યારે મંત્રાલય દ્વારા બિલ લાવવામાં આવ્યું છે ત્યારે હું એને સમર્થન આપું છું અને આવનારા દિવસોમાં સમગ્ર દેશના યુવા ખેલાડીઓને રમતની તમામ સુવિધાઓ આ બિલના માધ્યમથી ભારત સરકાર દ્વારા આપવામાં આવશે। અને બીજી વાત એ પણ ઉપાધ્યક્ષ મહોદય કરવા માંગુ છું કે 2014માં જ્યારે 1643 કરોડ હતું, 2024-25માં 3794 કરોડ જેટલું બજેટ એ મંત્રાલય દ્વારા ફાળવવામાં આવ્યું છે જેનો લાભ આવનારા દિવસોમાં ભારતના ખેલાડીઓને મળશે। Thank you. Shri R. Girirajan ji, not present. Shri Ayodhya Ramireddy Allah ji. Vice Chairman, sir. The National Sports Governance Bill 2025 and the National Anti-Doping Amendment Bill 2025 represent a good start in much needed reforms for our hard-working sportsmen and athletes. If implemented in true spirit, these two bills can bring in an era defined by transparency, inclusion, and fair play. Firstly, the National Sports Governance Bill 2025. This bill acknowledges what we have to achieve to be recognized as a global player in the sports field. As the Honorable Minister said, by 2047, if we have to be among the top 4 or 5 global players in the sports field, yes, certainly a strategy that we need to bring in at the Government of India level. And also every state and every district also we need to work out and create the strategy and structuring of implementation of those models to make our athletes the best in the world. I'm happy to note
that for first time our Olympic and Paralympic committees, our national and regional sports federations, all will operate under a single clear legal framework. What this bill brings in? No, this bill brings in a clarity for every state and district affiliate. They know where it stands today, and every athlete knows that their voice will be heard. Also, each national body will have an executive committee of up to 15 members, with at least 2 outstanding sportsmen and 4 women among them. This is not just a token, it's a promise that those who have felt unheard at the decision-making table will now say that it is firmly they can be heard. Also, our National Sports Board will issue ethics guidelines, audit fund usage, and step in when international recognition falters. No longer these federations will operate in shadows or also avoid critical accountability. When disputes arise, whether over selection, controversies or governance questions, our specialized National Sports Tribunal, chaired by a sitting or former Supreme Court judge, will deliver speedy justice. Athletes will not wait years for a courtroom decision. They will receive resolution and return to their training. Next, on the National Anti-Doping Amendment Bill 2025. We all agree that the spirit of our sports is a clean competition. Yet, without robust checks, that spirit can be compromised. The amendment empowers the central government to constitute the appeal panel and insulates it from undue influences. It shields NADA's leadership from pressure from any federation, committee or department, and that independence is vital. We strengthen our laboratories by mandating WADA accreditation for every testing facility. We also align ourselves lawfully with the World Anti-Doping Code. We also clarify who may appeal to the Court of Arbitration in sport, so that when our domestic system cannot resolve a matter, the global body can step in. Yet, Deputy Chairman, sir, our athletes as of now and the coming ones will need a lot more. We must build in at the federal level what we have to do and state level what we have to do. Especially at the state level, which is going to be the implementation. Taking the strategy and structuring inputs from Government of India, we must build a state level capacity. A national framework is only as strong as its weakest affiliate. I urge the government to pay recognition with targeted grants and training for state sports councils. We must also guard against central overreach. If the sports board grants an exemption, let us require a public explanation and parliamentary review. We must nurture the talent from the ground up. I propose district level grassroots sports councils so that every village cricketer and school level runners see a clear path to national trials. And also on anti-doping, strong penalties must be matched by strong education. Let us fund strong workshops and counseling for our athletes who make a first-time mistake. As we expand testing powers, let us enshrine data privacy safeguards, secure storage, limited retention, and strict access controls. When we shift the appeal panel to the central government, let us demand speed, 60 days maximum for both constitution and decision. Vice Chairman, sir, with these bills have the potential to improve governance and fairness in Indian sport. Addressing these concerns will ensure that the legislation is balanced, transparent, and effective at every level. From YSR Congress Party and our leader Y.S. Jagan Mohan Reddy, we support this bill subjected to the amendments. We urge the House to consider this bill. We support it.
Thank you. Thank you. Honorable Shri Subhashish Khuntia ji. जय जगन्नाथ। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले एक नेशनल खिलाड़ी को राष्ट्रीय खेल प्रशासन बिल 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी बिल 2025 पर बोलने का मौका देने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन दोनों बिल में कुछ कॉमन चिंताएं भी है। सबसे बड़ी चिंता अत्यधिक केंद्रीकरण की है। स्पोर्ट्स रेगुलेटरी बोर्ड ऑफ इंडिया और नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी तथा डिसिप्लिनरी पैनल्स की शक्तियां सेंट्रलाइज्ड होती देख रही है। इससे राज्यों की भूमिका सीमित हो सकती है, जो संविधान के अनुच्छेद 246 के अनुसार भारत के फेडरल स्ट्रक्चर के अनुकूल नहीं है सर। दूसरी चिंता खेल संघों के ऑटोनॉमी को लेकर है सर। यदि बिल्स में अत्यधिक सरकारी हस्तक्षेप की गुंजाइश रह गई तो सिलेक्शन, ट्रेनिंग और मैनेजमेंट में राजनीतिक प्रभाव की आशंका बढ़ सकती है सर। डोपिंग रोधी पैनल्स की नियुक्ति में यदि केंद्र सरकार की सीधी भूमिका होगी तो उनकी निष्पक्षता और स्वतंत्र निर्णय क्षमता पर भी सवाल उठ सकती है सर। तीसरी कमी दोनों बिल्स में ग्रास रूट स्तर की लेकर दिखाई देती है। खेल प्रशासन विधेयक में जिला और ब्लॉक स्तर पर स्पोर्ट्स एक्सीलेंस सेंटर स्थापित करने, स्थानीय खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने तथा आदिवासी और ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए कोई ठोस रूपरेख नहीं है। साथ ही आजकल बढ़ते जुआ और सट्टेबाजी का सीधा असर खिलाड़ियों पर पड़ रहा है, जो कई बार डोपिंग जैसे गलत रास्ते की ओर धकेल देते हैं। इसे रोकने की कोई स्पष्ट दृष्टि नहीं है सर। इन विधेयकों में खिलाड़ियों के लिए एजुकेशन, अवेयरनेस और रिहैबिलिटेशन जैसे मानवीय पहलुओं के नजरअंदाज किया गया है सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पे उड़ीसा के उदाहरण को सामने लेना चाहूंगा, जहां हमारे प्रिय नेता और पूर्व मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी के नेतृत्व में खेलों को लेकर एक एग्जाम्पलरी मॉडल तैयार किया गया। 2017 वर्ष में जब अन्य राज्यों ने एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप आयोजित करने में असमर्थ जताई थी, तब उड़ीसा सरकार ने मात्र 90 दिनों में उसे सफलतापूर्वक आयोजित किया सर। इसके पश्चात 2 बार पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन कर उड़ीसा ने विश्व खेल मानचित्र पे अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। कलिंग स्टेडियम, राउरकेला का नया स्टेडियम और गांव-गांव तक पहुंचती रेल खेल इंफ्रास्ट्रक्चर इस प्रयास का प्रत्यक्ष प्रमाण है सर। उड़ीसा मंडल यह दर्शाता है कि जब राज्य सरकार को खेल नीति और आयोजन में ऑटोनॉमी मिलती है तो वह न केवल नेशनल बल्कि इंटरनेशनल स्तर पर भी एक्सीलेंस दिखा सकती है सर। इसीलिए यह जरूरी है कि इन बिल्स में राज्य सरकार को बराबर की साझेदार के रूप में मान्यता दी जाए सर। पुरी के समुद्र तट पर स्थित श्री जगन्नाथ स्टेडियम भी खेल विकास का महत्वपूर्ण केंद्र बन सकता है सर, जहां रणजी ट्रॉफी जैसे क्रिकेट आयोजन करने हेतु केंद्र सरकार को बीसीसीआई से समन्वय करना चाहिए सर। साथ ही पुरी की पारंपरिक मल्ल युद्ध रेसलिंग परंपरा को यही आधुनिक खेल ढांचे के साथ विकसित किया जाए, क्योंकि हाल ही में इसका हॉस्टल कटक ट्रांसफर कर दिया है और खिलाड़ियों की स्थानीय पहुंच प्रभावित हो रही है सर। इस तरह नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी में टेस्टिंग लैब्स के अंतर्गत राज्यों में टेस्टिंग लैब, अवेयरनेस ड्राइव्स और रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स का विस्तार जरूरी है सर। मेरी यह सिफारिश रहेगी कि इन दोनों बिल्स के नियंत्रण नहीं बल्कि सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से लागू किया जाए सर। खेल का उद्देश्य केवल पदक जीतना नहीं बल्कि एक ऐसा समाज बनना है जहां हर बच्चे को खेलने का अवसर मिले, हर खिलाड़ी को सम्मान और हर नागरिक को गर्व अनुभव हो। जय जगन्नाथ, वंदे उत्कल जननी सर। थैंक यू। श्री प्रफुल्ल पटेल जी। Thank you, Vice Chairman sir. We are discussing the National Sports Governance Bill
And I compliment the minister for having brought this bill to both the houses for passage, because this is a very long-standing legislation which was required. I've been part of the sports ecosystem. I've been the president of the All India Football Federation. I've also represented India as a senior vice president at the Asian Football Confederation, and also had the privilege of being the first Indian to be on the FIFA governing council. So as a person having been in sports administration at the national and the international level, I do have some first-hand knowledge, and I can fully appreciate the sentiments and the views expressed by the minister and why the necessity of bringing this national sports governance bill. Sir, the minister mentioned rightly, in 2013, a genuine effort was made, and it's been going on much before that, since 1985, 40 years. We've had a sports code, but it's been a very loose code, it's been a very informal code, and it's never really stood any legal scrutiny. And that is why there was a need for a comprehensive legislation. And as the minister rightly pointed out, in 2013, when this was being sought to be passed, I was also part of the government. And I do recall some of the instances which the honorable minister did mention. I will not go into the further details, except to say that what is happening today and what is being discussed today is the need of the hour. Sir, all sports federations, say one thing we must admit, have been, having many difficulties, including financial. The biggest sport in our country is cricket, undoubtedly. And for that, the BCCI is a very self-sustained, self-sufficient body. And one of the reasons we cannot also just say BCCI has got money. BCCI has worked hard towards it. And BCCI became what it is today only when the country at the national level, when we won the first World Cup in 1983, did India really get the rise in international cricket, and therefore the BCCI became such a supreme body. The same way, until and unless any sport does not do well at the international level, see, everybody wants to see the Indian flag and the Indian team winning a world title. Whether it be hockey, whether it will be badminton, whether it be any other sport, that is the defining moment. And that is why what the minister is trying is to see that all sports federations do well and move in a direction which will bring glory to the country at an international level. Sir, the biggest advantage of this bill, sir, I am the probably one person who needs to speak 2-3 minutes, and the time is available from this side. So I would request you, please do not try to not express that was the time given, but anyway, carry on. No, I'm just telling you very honestly, sir. This is important. Somebody who has some authority on the subject should be allowed to speak. And I am speaking with the full knowledge what the Honorable Minister is trying to achieve through this bill. Prime Minister has a vision. We are hoping to win the bid for the 2036 Olympics. That itself would be a redefining moment for Indian sport. We talk of Viksit Bharat. Prime Minister said 2047, India should be a global sporting power. All this is a very laudable and something which is necessary. But for that, we need a framework. Today, every federation, he is right, 350 court cases, every single federation, right from All India Football Federation, where I was there, is mired in a legal case where the constitution has not been finalized for so many years. Courts take their own time because courts have many other cases. Here we are bringing in a tribunal headed by a high court judge, which can only be challenged in the Supreme Court. It will be focused. Such matters of dispute will be settled there. The other important part is that sports men, women, they should get representation in the national sports federations. This is being mandatory now by the bill. This is something which is most important because we all talk. All the PILs which get filed, they talk of, other vested interests being on bodies of sport, but not the sportsmen themselves. This gives them a mandatory opportunity to be representing the sports bodies. And therefore, I feel
that this bill is absolutely in the right direction. And we need to have, if sports in this country is to achieve glory far beyond cricket. Today we have individual achievements, but we have very few collective achievements. And that is why, Vice Chairman sir, this bill is very important. Even the other bill about doping, that also we are, as a nation, we compete in international events. We have to bring our laws, our regulations on par with the rest of the world. And therefore, it is very imperative that this bill be passed with the fullest support of everybody present here. And I compliment the Prime Minister for having this vision to have a national sports governance bill. And I also am very happy that we have a minister. Mansukh Bhai is one person who understands, he's taken pains. It's not just about being a minister. उन्होंने व्यक्तिगत इस ओर में बहुत लोगों से बातचीत की, लोगों से मंथन किया, स्पोर्ट्समैन से किया, अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बातचीत की. उसके बाद में ये कॉम्प्रिहेंसिव बिल लाने का काम मनसुख भाई ने किया. आपको भी अभिनंदन, सरकार को, प्रधानमंत्री जी को अभिनंदन, और आप सभी को मेरा निवेदन है कि ये बिल की बहुत जरूरत है, इसको हम सब साथ करें. थैंक यू. डॉक्टर भीम सिंह जी. माननीय सभापति महोदय, एक कवि ने लिखा है कि पत्थर से हो मांसपेशियां, लोहे से भुजदंड भय, नस नस में हो लहर जो इसकी तभी पर जवानी पाती जाए. इसी मनसा के साथ यह विधेयक माननीय खेल मंत्री जी ने लाया है. यह विधेयक, जो दोनों विधेयक पेश किए गए हैं, दोनों विधेयक शानदार हैं, लेकिन मैं अपने को राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक पर ही सीमित रखूंगा. महोदय, मैं विधेयक के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हूं. विधेयक काफी सोच विचार कर लाया गया है. सभी स्टेक होल्डर से व्यापक चर्चा की गई है. विधेयक में खेल से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है और उसे शामिल किया गया है. इसलिए विधेयक अभूतपूर्व है. अभूतपूर्व है क्योंकि इसके पहले देश के दुनिया में कहीं भी खेल से संबंधित कोई कानून मौजूद नहीं है. तो इसलिए जहां मोदी सरकार कई क्षेत्रों में चौका मार रही है, छक्का मार रही है, वहां आज खेल के दुनिया में भी सिक्सर मारने का काम किया है. महोदय, एक जमाना था जब कहा जाता था कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब और पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब. लेकिन वो जमाना नहीं रहा. आज खेल एक शक्ति के रूप में है. और जैसा हम जानते हैं कि दुनिया में हमारा खेल के दुनिया में स्थान थोड़ा नीचा है. मोदी सरकार चाहती है कि इस खेल के दुनिया में भी हम और भी ऊंचे स्थान पर जाएं. इसलिए आज परिवार का भी नजरिया बदल गया है, व्यक्ति का नजरिया बदल गया और सरकार का तो पूरा नजरिया बदल गया है. कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी उस समय कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था. स्मरण होगा माननीय सदस्यों को कि CWG गेम्स में कितना बड़ा व्यापक घोटाला हुआ था. 70,000 करोड़ रुपए तक का घोटाला का. और कौन किया? तो सुरेश कलमाडी, जो कांग्रेस पार्टी के नेता हुआ करते थे, उनके नेतृत्व में इतना बड़ा घोटाला हुआ. इसलिए इस शरीर को मजबूत करता है. खेल शरीर को मजबूत करता है और शरीर सभी धर्मों का पालन करने में हमारी सहायता करता है. शरीर माजं खलु धर्म साधनम, यानी कि शरीर से ही हम सभी धर्मों का पालन करते हैं. धर्मों यानी कर्तव्यों का पालन करते हैं. महोदय, ऐसी ही परिस्थिति में जो मौजूदा बिल पेश किया गया है, प्लीज कंक्लूड. इस बिल के जी कंक्लूड करें, आपका समय खत्म हो रहा है. हो गया? नहीं, कंक्लूड करें. 30 सेकंड्स. नहीं तो छोड़ दीजिए, इतना से क्या होगा. देखिए महोदय, मैं शांतिपूर्वक, एक बिल विधेयक आया, दूसरा विधेयक मैं कभी नहीं बोला, लेकिन आज बोलने के लिए खड़ा हुआ तो आपकी पार्टी से ही मिला है सब. नहीं, धन्यवाद. थैंक यू. श्री सतनाम सिंह सांधो जी, you have 3 minutes.
आपने मुझे इस बहुत ही ऐतिहासिक मौके पर बोलने का अवसर दिया है। माननीय सभापति जी, हमारा देश भारत विश्व की यंगेस्ट नेशन है और ये बिल हमारे देश के करोड़ों नौजवानों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। तो मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करना चाहूँगा, जिनके बारे ये माना जाता है कि देश को बड़े सपने देखने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सिखाए हैं। और जब हम इस बिल के माध्यम से प्रधानमंत्री जी के विजन को समझने की कोशिश कर रहे थे, जब माननीय मंत्री महोदय इसके बारे विस्तार में बता रहे थे, तो 3 बड़े सपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी नेशन के लिए हमारे सामने रखे हैं। 2036 में ओलंपिक्स की मेजबानी करना एक बड़ा सपना है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने रखा है। और दूसरा बड़ा सपना वर्ल्ड के टॉप 5 नेशंस में स्पोर्ट्स में भारत को लेके आना, ये दूसरा बड़ा सपना है। और तीसरा बड़ा सपना और बहुत ही अहम सपना जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश को दिया है, वो है विमेन लेड स्पोर्ट्स का सपना। ये पहली बार होगा कि स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में हमारे देश की बेटियों को, हमारी देश की बहनों को बराबर का मौका दिया जाएगा। और मैं समझता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को बड़े सपने देखना सिर्फ सिखाया नहीं, उसको हकीकत में प्राप्त कैसे करना है, अचीव कैसे करना है, वो इस बिल के माध्यम से उन्होंने बता दिया कि बड़े सपने देख के अचीव कैसे करने हैं। और मुझे लगता है कि ये तीनों बड़े सपने जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें दिए हैं, इस बिल के माध्यम से वो पूरे होंगे। और मैं अपनी ओर से, खास करके मैं पंजाब की धरती से आया हूँ, पंजाब की वो धरती जिसने हमेशा ही देश के स्पोर्ट्स का गर्व बनाने में सबसे बड़ा योगदान दिया है। मैं पूरे पंजाबियों के तौर से इस बिल का समर्थन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। माननीय श्री जयंत चौधरी जी। धन्यवाद सभापति जी। मैं खेल मंत्री भारत सरकार में मनसुख मांडविया जी को खास तौर से, जो उन्होंने एक साहसी पहल और प्रयास किया है और इस सदन में एक व्यापक मसौदा तैयार किया, मैं धन्यवाद देता हूं। देश के युवा शक्ति के तरफ से एक आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं भारत सरकार को। मैं भी एक मंत्री के नाते उस सरकार में हिस्सा हूं। ये इस सदन में हमने देखा है कई बार कानूनी सुधार के दृष्टि से जो पुराने कानून है उसमें हम संशोधन लाते हैं, लेकिन ये कोई पीसमील चेंज या परिवर्तन नहीं है। ये होलसेल रेवोल्यूशनरी एक चेंज है, एक नई क्रांति लाने वाला कानून का तैयार किया गया मसौदा। जैसा कि अभी प्रफुल्ल जी कह रहे थे, इसमें कई तकनीकी पहलू हैं, कई कारण है कि ये बात यहाँ तक पहुंची। जो एसोसिएशंस में मिस गवर्नेंस हो रहा था, लीगल लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज चल रहे थे, और जिस कारण से खेल का विकास रुक रहा था, जिस कारण से एक युवा भारत में जो युवा एक सामर्थ्य है, जो प्रतिभा है, टैलेंट है, मेहनत है, वो विश्व पटल पे निखर के नहीं पहुंच पा रही थी। उसमें सुधार लाने के लिए कानून लाया गया है। और मैं मानता हूं कि अब तक कई एसोसिएशन में जो देश का अनुभव रहा है कि वो नेता आधारित एसोसिएशन, कुछ नेताओं के एम्बिशन के इर्द गिर्द रहने वाले संगठन के रूप में उनको आम जनता देखने लगी थी। अब नेता से हट के नियम और नीति आधारित होंगे और पूरा उनका नियंत्रण और नेतृत्व खिलाड़ी और पूर्व खिलाड़ियों के हाथ में होगा। साथ ही जो हमारे पैरा एथलीट्स हैं, जो स्पेशल ओलंपिक्स में भाग लेते हैं, जो हमारी विमेन एथलीट से आधी आबादी है, उनके सम्मान में यह कानून का प्रस्ताव लाया गया है। मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं जिस राज्य से इस सदन में पहुंचा हूं, उत्तर प्रदेश में, मैंने महसूस किया कि गांव-गांव में इतनी प्रतिभा है, आवश्यकता है कि कम उम्र में हम उनको पहचानें, उन्हें वो अवसर दें। जो मूलभूत सुविधाएं, जो ढांचे, जो संरचना खेल के विकास के लिए गांवों में, ग्रामीण क्षेत्रों में होने चाहिए, जो आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया, खेलो इंडिया के माध्यम से और जो प्रधानमंत्री का खुद व्यक्तिगत लगाव है, उस कारण से चीजें बदलने लगी। मैं मानता हूं कि आज ऐसा कोई भी स्पोर्टिंग डिसिप्लिन हो, भारत का एथलीट, जैसा प्रफुल्ल जी कह रहे थे, जब कोई जीत के आता है
और भारत का झंडा वहां फहराया जाता है, देशवासियों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज कोई भी एथलीट जब जीतता है, शायद हम सब में सबसे पहला ट्वीट बधाई देने वाला देश के प्रधानमंत्री खुद देते हैं। तो युवाओं की पीठ थपथपाना, युवाओं का सम्मान करना, कौशल विकास में भी मैं देखता हूं, और हमारी भी कोशिश है, एक स्किल काउंसिल है जो स्पोर्ट्स पे डेडिकेटेड है। स्पोर्ट्स की पूरे इकोसिस्टम को हमें विकास करना है, और ये कानून भी उसमें मददगार होगा। मेरठ का एक जिला और पंजाब दोनों को अगर आप कंबाइन करेंगे तो स्पोर्ट्स गुड इंडस्ट्री जो देश की अर्थव्यवस्था में बहुत मजबूती से योगदान देता है, एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्री है, लाखों को रोजगार देता है, लगभग 80% उत्पादन अकेला मेरठ और पंजाब के एक शहर में। अब हमने, भारत सरकार ने और यूके ने FTA कर दिया। उस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के माध्यम से हमारी स्पोर्ट्स गुड इंडस्ट्री का भी बहुत प्रबल विकास तेज गति से होने जा रहा है। तो ये सारी चीजें एक समावेश करते हुए देश के युवाओं के सम्मान में, खिलाड़ियों के सम्मान में, खिलाड़ियों को समाज में वो ओहदा देने के लिए, उनकी जीविका के निर्माण के लिए, उसके कौशल के विकास के लिए ये कानून का मसौदा इस सदन में चर्चा के लिए है। मैं अपना पूर्ण समर्थन इस प्रस्ताव को देता हूं। धन्यवाद। थैंक यू। श्रीमती सुधा मूर्ति जी, you have 5 minutes, ma'am. Thank you, sir, giving me an opportunity to talk about sports, and particularly I'm going to talk on anti-doping. When Buddha was meditating, he was so thin and he did not care for his body. Sujata came and gave him a glass of milk and said, to achieve something in life, you require good health. And Buddha drank that. Later Siddhartha became Gautama Buddha, and today he represents peace everywhere in the world. He's a global leader in terms of the peace, etc. But the main reason was Sujata, who told him, Sharira Madhyam Khalu Dharma Sadhanam. Body is the mediator, or it's through my body we can do many better things, and we have to look after the body and good health. India is very fortunate. We have a great majority of the youths are in our country, and the wealth of a youth is good health. So to have a good health, you require to play sports. It is one of the essential thing in life to play outside, to play games. Even in terms of psychology, endorphins will release. So sports plays an important role. I'm extremely happy that our government of India, in the leadership of Mr. Modi and Monsoon Ji, our sports minister, is coming with a bill or a law on sports law, which is very, very essential. Now we are in par with other global institutions like WADA, WADA, and we have NADA, we have lab, our own lab, etc. But this amendment will bring us removing the erroneous part or the less part and making us internationally, globally competitive. I just want to touch one portion in this, that in villages, in rural areas, there is a lot of people, particularly children, who are very good at sports with no connection to the high level or international or even a national level game kind of a facility. Apart from that, they will not even know what is doping, which is my subject today. They won't understand what is doping, what is non-doping. There are many food items they may consume without knowing intentionally or unintentionally, which may result in doping. And once the person is found out he's doped or she's doped, then you know the consequences. They will be barred from many months or years, depending on that athletes. They will not know this. So I require, along with this bill, we should have actually awareness program, particularly in rural area where our children are bright. And with Khelo India, they are getting a lot of facility to come up to the national level, but making aware of doping, which is a bad habit, and not knowing this, they may land up somewhere else. So these are a few things which I want to tell. There should be an awareness camp, or to tell children what is doping, why they should not do. And second thing, it should be taught in a regional language. It should be taught in a regional language. Third one is, we should also give them mental counseling. Number 4 is, we should make it mandatory, all these things, so that lot more awareness of doping, and we should not use that. Fifth one is, we should also give them
what is the best food which doesn't come under doping, and you should not even touch it. So these are the few things if we add to the fantastic bill, which is making us great, our Bharat internationally equal to anyone, so that we can definitely compete in the Olympics, and hope one day we will also host Olympic Games in our country, and we'll follow these rules. And I want to congratulate once again people involved in this, officers, our minister and our prime minister, and bringing anti-doping bill, making us very proud with the international level. Dhanyawad, Jai Hind. Thank you. माननीय श्री केसी देवी सिड झाला जी, खड़े हो जाओ. You have 3 minutes. Just 3 minutes, okay sir. धन्यवाद उपसभापति महोदय. महोदय, आपने इस महत्वपूर्ण बिल पे बोलने का मुझे मौका दिया है, उसका मैं आपका धन्यवाद करता हूं. साहब, इस देश का नेतृत्व जब मोदी साहब ने संभाला 2014 में, तब हर एक वर्ग, हर एक विस्तार, हर एक विषय के लिए प्लानिंग करी उन्होंने. जब उन्होंने देश का फ्यूचर रोड मैप उन्होंने तैयार किया, तब हमारे देश के अंदर पूर्व की सरकारों ने कभी भी खेल की दुनिया में डेवलपमेंट करने का कभी विचार नहीं किया. पॉलिसी पैरालिसिस से लेकर कोई विजन ना होने के कारण से, फंड्स की एलोकेशन ना हो और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ना हो, ऐसे प्रकार की स्पोर्ट्स की जो भारत देश के अंदर परिस्थिति थी, उसमें से बाहर निकालने के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के नेतृत्व में हमारे माननीय मंत्री श्री मनसुख भाई मांडविया जी के विजन के तहत जो स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025 का आज ये डिस्कशन हो रहा है. महोदय, ये बिल एक बहुत महत्वपूर्ण बिल है. आने वाले समय के अंदर भारत देश को, जो देश अपना हर एक विस्तार, हर एक वर्ग के अंदर, हर एक विषय के अंदर विकास कर रहा है, उसको एक खेल महासत्ता बनाने की तरफ ये बिल ले जा रहा है. महोदय, बिल के अंदर एक स्पोर्ट्स रेगुलेटरी बोर्ड जो हमारे राष्ट्रीय स्पोर्ट्स फेडरेशंस को ओवरसी करेंगे, एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क तैयार करेंगे, और जो काफी समय से पॉलिसी के ब्लैंक स्पॉट्स थे उनको भरने के लिए जो लीगल फ्रेमवर्क बनाए हैं, उसके थोड़े मैं मुद्दे रखूं. जो हमारा नेशनल स्पोर्ट्स गवर्निंग बॉडीज हैं, जिनके माध्यम से, इस बिल के माध्यम से नेशनल ओलंपिक की कमेटी बनेगी, पैरालंपिक कमेटी बनेगी, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस का निर्माण किया जाएगा. इस सब के माध्यम से देश के स्पोर्ट्स का विषय आगे बढ़ेगा. केंद्र सरकार ने एक खेलो भारत नीति के माध्यम से भारत देश को एक स्पोर्ट 2047 तक टॉप 5 नेशंस में लाने का जो रोड मैप रखा है, उसके मूल जो कोई विचार हो तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत आगे आए, ग्रास रूट लेवल से हमारा टैलेंट स्पॉटिंग हो, वहां से चालू करके मजबूत कोचिंग और ट्रेनिंग सिस्टम्स के माध्यम से हमारे स्पोर्ट्समैन आगे बढ़े, कॉम्पिटिटिव लीग्स में भाग लें, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो सरकार बना रही है उसके माध्यम से देश का नाम रोशन करे. स्पोर्ट्स एक इकोनॉमिक ग्रोथ इंजन भी आने वाले समय में बनने जा रहा है. स्पोर्ट्स टूरिज्म हम देख रहे हैं, हमारे यहाँ मेजर इवेंट्स हमारे भारत देश के अंदर पिछले 10 साल के अंदर करने में आए हैं, जैसे कि मेंस हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी, अंडर 17 वर्ल्ड कप फुटबॉल, मेंस हॉकी वर्ल्ड कप, FID चेस ओलंपियाड, मोटर GP भारत. इस प्रकार के इंटरनेशनल लेवल के स्पोर्ट्स के जो हमारे देश के अंदर करने में आए. महोदय, आपने सिर्फ 3 मिनट दिए हैं, इसलिए ज्यादा आपकी पार्टी ज्यादा ना खेलते तो नहीं कहते. महत्वपूर्ण बजट भी दिया गया है मंत्रालय की तरफ से. एक समय में 2014 में जो 1640 करोड़ का बजट था, वो आज 3800 के आसपास का बजट करा गया है. खेलो इंडिया ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से हजार करोड़ खेलो इंडिया के माध्यम से इस देश के अंदर बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है. प्लीज कंक्लूड. महोदय, सब नाम ना लेते, हमारे देश के अंदर आज घर घर के अंदर सब जानते हैं हमारे ओलंपिक मेडलिस्ट जो भारत का नाम रोशन कर रहे हैं. मैं सबका नाम न लेते हुए एक नाम मैं आज लेना चाहूंगा. हमारे जम्मू कश्मीर विस्तार से एक 18 साल के हमारे वर्ल्ड्स फर्स्ट फीमेल
आमले साचर श्री शीतल देवी जी, हम सब ने उनको भारत का नाम रोशन करते हुए देखा। ये एक भारत की एक विकास गाथा की एक एग्जाम्पल है महोदय। हमारी नारी शक्ति का एक एग्जाम्पल है। हमारी बेटी जिन्होंने एक जम्मू कश्मीर के विपक्ष के नेता कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में क्या हो, मैं कहता हूं ये एक दाखला लीजिए। 17 साल की हमारी बेटी भारत का नाम पूरे दुनिया के अंदर रोशन करके आई है। थैंक यू। इस प्रकार का काम आगे बढ़ता रहे और भारत एक विश्व खेल में महासत्ता बने, उस प्रकार का जब माहौल खड़ा हो रहा है, तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहब का जो विजन है विकसित भारत 2047 का, उसमें सब विभाग का विकास होना चाहिए। खेल एक महत्वपूर्ण विषय है। इस बिल के माध्यम से भारत एक खेल का महासत्ता बनेगा और इस बिल का मैं समर्थन करते हुए मेरी बात को शॉर्ट में खत्म करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू। 3 मिनट में क्या बोलेंगे? श्रीमती पीटी उषा जी। Honorable Chairman, sir, I am grateful to you for giving me this opportunity to express my thoughts in this august house about this landmark legislation which is close to my heart. Chairman, sir, today is a day of immense personal and national significance, with deep emotion, pride, and a sense of nearing towards historic justice. We as a nation and a civilizational continuity have always been invested in sports. As our Prime Minister Narendra Modi ji had mentioned in his speech during 141st IOC session in Mumbai, that I quote, "We Indians are not only sport lovers, but we live our lives in sports." And the evidence of sporting history in archaeological remains, including one site where the remains of 10,000-seater stadium were found, signifies that this was not just India's heritage, but that of the entire world. We, the Bharatiya, are hence the holders of historic and civilizational legacy in sports. Not just to ourselves, but to the world. Our past is evidence of our greater role in sports. As an athlete, as a sports person who has worn the tricolor closer to the heart, and now as a president of the Indian Olympic Association and a member of this house, I have long awaited this moment, a moment that has remained a dream since 1985. Let me take you back to 1984. It was Los Angeles Olympics. I was just 20-year-old when I missed an Olympic bronze medal in 400-meter hurdles by 1/100th of a second. That day, my heart broke, not just for myself, but for an entire generation of Indian athletes who had the strength, the will, the courage, but not the system, not the apparatus to handhold us efficiently through our journey. There was no comprehensive sports law to support the dreams we carried in our hearts. No institutional mechanism to protect the athletes, to promote transparency, or to ensure fair play in governance. Since then, 4 decades have passed, with nothing much changing in terms of addressing the stagnant status quo. For 40 years, many of us in the sporting fraternity have hoped, prayed, and worked tirelessly for promulgating the legislation that would place the athlete at the very center of India's sporting ecosystem that is rightful, natural, and justified. Today, the hope has transformed the action and legislation. I congratulate the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, the Sports Minister Mansukh Mandaviya ji, and the government for presenting a visionary and long overdue framework in the form of National Sports Governance Bill 2025. This will usher in accountability, transparency, gender parity, and a merit-based approach in how sports federations function in our country. It will empower athletes, make governance athletic-centric, and build confidence among sponsors, federations, and international partners. This bill is not beyond governance. It is about justice and fair play. It is about ensuring that every young girl from village in Kerala or a boy from mountains of Himachal dreaming of participating in the Olympics will have a system that believes in them, encouraging and supporting them as such.
much as they believe in themselves. Honorable Chairman, sir, this legislation comes at the time when India is dreaming big, dreaming Olympic, dreaming for its rightful share in the global sporting fraternity. Under the visionary leadership of Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, India has set its sightful one hosting in 2036 Olympics. In 1 more minute. Please. I would again quote the Honorable Prime Minister that I quote, sport is not a medium of winning medals, but it is a medium to win people to heart. Sport belongs to everyone. It is for everyone. Sport not only creates champions, it also promotes peace, progress and wellness, and a very strong and empowered medium for connecting the world. For Bharat, this is not just a bid. It is a declaration of her capabilities and a clarion call for diplomacy through sports. Our Olympic bid is also an emphatic declaration that Bharat is ready, capable, and determined to take its rightful place on the global sporting stage. This bill is a critical pillar of that grand vision. Without robust governance and well laid out statutes, the dream of hosting the Olympics and emerging as global sporting powerhouse would remain incomplete. It is this government commitment to the Vikasit Bharat, a developed India, that truly reflects in this legislation. Let us not see this only as a legal framework. Let us see this as a moral promise, a promise that athletes will no longer be let down by the opaque system or internal politics. That talent will be celebrated, not sidelined. That India will not just participate, but compete, win, and lead. Honorable member. One more. As someone who once ran a barefoot on a clay track and who now stands here in Parliament with the responsibility of representing both athletes and citizens, I can say with full conviction, this bill will change lives. Let me also bring out the needs for most critical segment in sports administration and fair conduct. That is the need for a very strong and resolute legislation on anti-doping mechanisms. The National Anti-Doping Amendment Bill 2025 has assured NADA's operational independence and the creation of National Board for Anti-Doping in Sports with powers to oversee NADA and advise the government to anti-doping rules. We have entered a new era where the effective curbing of the menace of doping can be independently addressed. Let me also state that it is through such effective legislation that we can improve our image and evolve as a sporting superpower by bringing in a new culture of clean sport, and our commitment to clean athletics can be achieved by adhering to stringent regulations. I would also like to point out that stringent measures are now taken to ensure dope-free athlete and dope-free Bharat so that our dream of hosting the Olympic is paved smooth by cleaning up the sports sector by the landmark legislations. In conclusion, I thank Honorable Minister Sri Narendra Modi ji and Sri Mansukh Mandavia ji and the Government of India for listening to the voice of the athletes, past and present. I thank my fellow members for overwhelming support this bill has received. And I say to every young athlete watching today, आपका समय आ गया है, your time has come. देश बदल गया है और आपका सपना देश से सार्थक होगा क्योंकि मोदी सरकार आपका साथ है हर कदम, हर मोड़ और हर क्षण पर. I would conclude by saying every young Indian waiting to fulfill their dream to become successful in sports, in athletics, this will illuminate their path with clarity and purpose. The nation stand with you, for you, and because of you. Let this be the beginning of India's sporting golden age and a Khel Krida Amritkal. Jai Hind. Thank you. Thank you. Thank you. Dr. Parmar Jashwant Singh Salam Singh. Thank you, Honorable Vice Chairman, sir. I rise to speak on the National Sports Governance Bill 2025, a landmark step in India's journey towards transparent, accountable, and athlete-centric sports governance. Sir, under the visionary leadership of Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji,
The last 11 years have seen a revolution in India's sports ecosystem, from state-of-the-art infrastructure, increased budgetary commitment, and talent grooming from the remotest corners, preparing India for hosting mega events like upcoming Under-20 Athletics Championship and potentially the 2036 Olympics. Sir, why this bill is necessary? The existing National Sports Code of 2011 was only a set of guidelines, not a binding law. Many national sports federations ignored these mandates, delaying elections, excluding sports persons from decision-making, and failing to submit audited accounts. This opened the door to political interference and financial opacity. Sir, we must not forget the painful lessons of the past. In 2012, under the Congress-led government, the Indian Olympic Association was suspended by the International Olympic Committee for violating the Olympic Charter. Indian athletes had to compete under a neutral flag, a moment of deep shame for the nation. Scandals like the 2010 Commonwealth Games further tarnished our global reputation. Sir, the salient features of the bill creates a national sports board to oversee governance of all recognized sports bodies, including the BCCI for the first time, ensuring uniformity, transparency, and accountability. It empowers the board to suspend or derecognize anybody that fails to publish audited accounts, misuse public funds, or neglect timely elections. Importantly, Section 115(2) designates recognized sports organizations as a public authorities under the RTI Act 2005, enabling citizens to hold them accountable. Sir, the bill mandates every national sports federation to form the athletes committee so that the sports persons have a legitimate voice in governance with the representation on executive committees. Another historic feature is the establishment of a national sports tribunal to swiftly resolve sports disputes, clearing nearly 350 pending cases from our courts and building a robust body of sports jurisprudence in India. In conclusion, the bill is not just about rules and structures, it is about protecting our athletes, restoring public trust, and positioning India as a global sports powerhouse. I wholeheartedly support this timely and far-sighted legislation, and I also congratulate our Prime Minister, sir, and Sports Minister, sir, and I urge the House to pass it with unanimity for the future of Indian sports. Thank you, sir. Thank you. Shri Sana Satish Babu. Thank you, Vice Chairman, sir. Sir, I stand here to support the National Sports Governance Bill 2025. On behalf of Telugudesam Party, on behalf of my Honorable Chief Minister Nara Chandrababu Naidu garu, we are supporting this bill. Who's Nara Chandrababu Naidu in his leadership, we formed the Sports Policy 24-29, which is placed in Andhra Pradesh. As a sportsman, myself as the Secretary of Andhra Cricket Association, I know the real champions are made at grassroots. This bill is a big step towards building the complete system from finding talent in rural villages to ensuring the fair governance and athletic care. Sir, this landmark bill is a game changer for Indian sports, giving a clear legal framework to run National Sports Federation with a honesty, fairness, and transparency. For the first time, athletic protection at the center. With the safe sports rules, quick grievances systems, and fair selection process. Sir, this establishing the National Sports Tribunal in this bill is modeled at the world-class famous court of arbitration of sport. It resolve the disputes smoothly and fairly. And one more thing, sir, this age limits and between 25 to 70, it will give the balance, the youth and experience in the governance. It's good for the governing councils
sir. Through the national panel electoral officers, the election cleanness of the elections of the body with these electoral officers is going, the clean governance will come in this thing, sir. Sir, as per the clause 30 of this bill, empowering the center to adopt the international best practices, preferably aligned with our state roadmaps under the Honorable CM Nana Chandrababu Naidu Garu, from hosting the national events, improving the rural facilities, and integrated artificial intelligence and data analytics in the athletic training, sir. Sir, so here I mentioned about my parent body, BCCI. This is a clear benchmark for all the sport bodies can follow this model of Excel, as this is the most successful example for the sports governing and management. Since 2019, has grown in professionalism and global respect. With the cricket returning to the Olympics in 2028, India has been golden chance to shine this world, sir. Sir, India aiming the host 2026 Summer Olympics, this bill will prepare our sports governance for the world stage. Under the strong leadership of Narendra Modi ji, Honorable Prime Minister Narendra Modi, it will be create better system, nurture the champions, and make India proud and bigger stage in the global sports, sir. I congratulate Honorable Sports Minister Mansukh Wadia ji for the getting this bill, sir. Thank you, sir. Thank you. Srimati Dharamshila Gupta ji. माननीय उपसभापति महोदय, आपका आभार। आपने आज इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का मुझे अवसर दिया है। आज जब मैं राष्ट्रीय खेल सुशासन विधेयक 2025 पर चर्चा के लिए खड़ी हूं, तो मुझे गर्व है कि यह विधेयक हमारे देश के खेल इतिहास में एक नए युग की शुरुआत करने जा रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहती हूं कि यह बिल आधी आबादी के सम्मान में लाया गया है। मैं माननीय खेल मंत्री आदरणीय मनसुख मांडविया जी के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहती हूं कि उनके प्रयास से यह बिल लाया गया है और उन्होंने अपने संबोधन में कहा है कि स्पोर्ट्स नेशन कमीशन में 4 महिला प्रतिनिधि भी रहेंगी। यह केवल खेलों के प्रशासनिक सुधार का प्रयास नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी व्यवस्था की स्थापना का संकल्प है जिसमें पारदर्शिता, जवाबदेही और नैतिकता सर्वोच्च हो। इस विधेयक के माध्यम से खिलाड़ियों के अधिकारों की रक्षा, खेल के विकास का स्पष्ट रोड मैप और शिकायतों के समयबद्ध समाधान की ठोस व्यवस्था सुनिश्चित होंगी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीते वर्षों में खेलों का स्वरूप ही बदल गया है। पूर्व की सरकार ने खेल पर कोई ध्यान नहीं दिया था और युवाओं की प्रतिभा को आगे बढ़ने नहीं दिया था, लेकिन आज खेल केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का एक सशक्त साधन बन चुके हैं। खेलो इंडिया ने गांव-गांव में खेल की संस्कृति को पुनर्जीवित किया। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम ने खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण और संसाधन उपलब्ध कराए और फिट इंडिया मूवमेंट ने पूरे देश को स्वास्थ्य और खेल के महत्व के प्रति जागरूक किया। टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, एशियाई खेलों और कॉमनवेल्थ में लगातार बढ़ता पदक संख्या, यह सब इस सरकार की दूरदर्शी नीतियों और खिलाड़ियों के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यह माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की सोच है कि एक महिला सांसद होने के नाते मैं यह भली भांति समझती हूं कि खेलों में महिलाओं की भागीदारी और सुरक्षित माहौल कितना महत्वपूर्ण है।
यह विधेयक हर खिलाड़ी, चाहे वह पुरुष हो या महिला हो, को समान अवसर और निष्पक्ष व्यवस्था का भरोसा देता है। यह सुनिश्चित करेगा कि खेलों में केवल प्रतिभा और मेहनत का मूल्यांकन हो, न कि किसी अन्य आधार पर भेदभाव। आज हमारे देश में खेल महज एक प्रतियोगिता नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बन रहे हैं। इस विधेयक के जरिए हम न केवल खेलों में सुशासन की नई परंपरा स्थापित करेंगे, बल्कि एक ऐसी पीढ़ी तैयार करेंगे जो अनुशासन, ईमानदारी और देशभक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में अपनाएगी। थैंक यू। मैं पूरे विश्वास के साथ कहती हूं कि राष्ट्रीय खेल सुशासन विधेयक 2025 भारत को खेल महाशक्ति बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम है और आने वाले वर्षों में हमारे देश की खेल प्रतिभाओं को विश्व के शिखर तक पहुंचाएगा। इसलिए मैं इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। श्री रविचंद्र वड्डीराजू जी। థ్యాంక్ యూ సార్. నేషనల్ స్పోర్ట్స్ గవర్నెన్స్ బిల్ 2025, నేషనల్ యాంటీ డోపింగ్ అమెండ్మెంట్ బిల్ 2025 గురించి మీరు మాట్లాడడానికి అవకాశం ఇచ్చిన డిప్యూటీ చైర్మన్ థ్యాంక్స్ చెప్తూ, యువజన వ్యవహారాలు మరియు క్రీడల మంత్రి గారు తీసుకొచ్చిన ఈ బిల్లు నుంచి మంచి ముందడుగు. ఇది దేశంలో క్రీడలను బలోపేతం చేయడానికి, న్యాయంగా మరియు పారదర్శకంగా ఉండడానికి, ఒలింపిక్ చార్టర్ వంటి అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలను పాటిస్తూ క్రీడా స్ఫూర్తి గల దేశాన్ని నిర్మించడానికి ఇది ఒక మంచిగా ఉపయోగపడుతుందని మేము నమ్ముతూ మేము ఈ బిల్లుకు సపోర్ట్ చేస్తున్నాం మనస్ఫూర్తిగా. క్రీడా అభివృద్ధి గల క్రీడాకారుల రక్షణ మరియు సక్రమ పరిపాలనకు దోహదం చేయడం, క్లాస్ 3 ద్వారా నేషనల్ ఒలింపిక్ కమిటీ, నేషనల్ పారా ఒలింపిక్ కమిటీ, నేషనల్ స్పోర్ట్స్ ఫెడరేషన్ మరియు రీజనల్ స్పోర్ట్స్ ఫెడరేషన్ ఏర్పాటుకు ఇది మార్గం సుగమం చేస్తుంది. క్లాస్ 4 ద్వారా ఈ సంస్థలో సమాన ప్రాతినిధ్యం, ప్రతిభావంతులైన క్రీడాకారులకు స్థానం, మహిళలకు ప్రాధాన్యత, పదవీకాల పరిమితులు మరియు నైతికత వివాద పరిష్కారం, క్రీడాకారుల కమిటీ ఏర్పాటు, ఇది పక్షపాతం తగ్గిస్తుంది, న్యాయం పెంచుతుంది. క్లాస్ 6 ద్వారా ఇతరులను రక్షించే సేఫ్ స్పోర్ట్స్ పాలసీ అమలు చేయడం, క్లాస్ 12 ద్వారా కోడ్ ఆఫ్ ఎథిక్స్ తప్పనిసరి, క్లాస్ 13 ద్వారా ఫిర్యాదు పరిష్కార సమస్యలు, క్లాస్ 17 ద్వారా మాజీ సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తి లేదా హైకోర్టు న్యాయమూర్తి ద్వారా నేషనల్ స్పోర్ట్స్ ట్రిబ్యునల్ ఏర్పడుతుంది. క్లాస్ 16 ద్వారా క్రీడా సంఘాల ఎన్నికలు న్యాయంగా జరగడానికి ఎలక్షన్ ప్యానెల్ ఏర్పడుతుంది. క్లాస్ 14 ద్వారా గుర్తింపు పొందిన సంస్థలకే ప్రభుత్వ నిధులు అందుతాయి. గౌరవ తెలంగాణ కేసీఆర్ తొలి ముఖ్యమంత్రి గారు గత 10 ఏళ్లలో దాదాపు 300 నుంచి 400 కోట్లు క్రీడలకు ఖర్చు పెట్టి 119 నియోజకవర్గాల్లో అనేక స్టేడియాలు నిర్మించి దాదాపు 36 స్టేడియాలు కంప్లీట్ చేయడం జరుగుతుంది. 33 జిల్లాల్లో కూడా ప్రతి ఇండోర్ స్టేడియాలు నిర్మించడం జరిగింది. తెలంగాణ ఉదాహరణకు 50 మంది ఒలింపియన్లను పుల్లెల గోపిచంద్, సానియా మిర్జా, నైనా సెహ్వాల్, పివి సింధు వంటి స్టార్లను తయారు చేశారు. మహమ్మద్ సిరాజుద్దీన్ కూడా, ఇషాన్ సింగ్ షూటర్ చాలా గొప్పగా, నిఖిత్ జరీనా కూడా 2 సార్లు గోల్డ్ మెడల్, బాక్సర్, వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్, కామన్వెల్త్ గేమ్లో, ఆసియన్ గేమ్లో కూడా ఛాంపియన్ చేసిన తెలంగాణ. మహబూబాద్ మా సొంత జిల్లా అయినటువంటి మహబూబాద్లో సాధుల మేఘన 25 మీటర్స్ రైఫిల్, స్పోర్ట్స్ పిస్టల్ కూడా ఒకసారి జూనియర్ ఆసియన్ ఛాంపియన్షిప్, జూనియర్ వరల్డ్ కప్లో గోల్డ్ మెడల్. శ్రీజ ఆకుల అనేక మంది పిల్లల్ని గొప్పగా అభివృద్ధి చేసినటువంటి సమయం నిధులు కేటాయించడం జరిగింది కేసీఆర్ గారు. హాకీ స్టేడియంలో ఆధునిక సౌకర్యాలు లేక పాత పరికరాలు ఉన్నాయి. హాకీ, ఫుట్బాల్, బాస్కెట్బాల్, ఈత కొలలు తగినంత స్విమ్మింగ్ కోచింగ్స్ లేవు. దేశ బడ్జెట్లో 2161 కోట్ల రూపాయలు కేటాయిస్తే తెలంగాణకు 17 కోట్లు మాత్రమే కేటాయించారు. తక్కువ క్రీడాకారులను సప్లై చేసేటువంటి గుజరాత్, ఉత్తరప్రదేశ్కు 40% నిధులు ఇస్తే కేవలం 17 కోట్లు మాత్రమే తెలంగాణకు ఇవ్వడం జరిగింది. ఇంకా ఇది డోపింగ్ గురించి మాట్లాడాలంటే పరీక్షా సదుపాయాల్లో తెలంగాణలో అసలు డోపింగ్ కు ఏమేమి నిషేధిత పదార్థాలు తెలియజేయాలి తెలంగాణ భాషలలో. తెలంగాణ డోప్ పరీక్షల కోసం ఇతర రాష్ట్రాల ల్యాబ్లపై ఆధారపడాల్సి వస్తుంది టెస్టింగ్ కోసం. గ్రాస్ రూట్ అవసరాలు కూడా చాలా తీర్చాలి సరైన పోషకాహారం ఇస్తూ. కొన్ని సూచనలు: గ్రామీణ మరియు అర్బన్ ప్రాంతాల్లో తెలుగు మరియు స్థానిక భాషల్లో అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలి. హైదరాబాద్ వాడా అగ్రిమెంటేషన్ పొందిన డోప్ టెస్టింగ్ ల్యాబ్ ఏర్పాటు చేయాలి. యువ క్రీడాకారులకు పోషకాహారం, వైద్య సహాయం మరియు శిక్షణ మద్దతు ఇవ్వాలి. నాడా మరియు వనరులు శిక్షణ పొందిన సిబ్బంది అందించాలి. ఇది డోపింగ్ వ్యవహారంలో ఇప్పుడు పెట్టినటువంటి బిల్లు కానీ ఈ బిల్లు ఒక మంచిది. ఇది క్రీడా సంఘాల స్వతంత్రాన్ని కాపాడుతూ, బాధ్యతను పెంచుతూ, న్యాయమైన వనరుల పంపిణీ కోసం చిన్న మార్పులు చేస్తే అనేక రాష్ట్రాలకు సమాన ప్రయోజనం కలుగుతుందని మాన్సుఖ్ మాండవీయ గారు పెట్టిన బిల్లును
దీని ద్వారా తెలంగాణ రాష్ట్రానికి కూడా మంచి మేలు జరుగుతుందని నమ్ముతూ ఈ బిల్లుకు మేము బీఆర్ఎస్ పార్టీ సంపూర్ణంగా మద్దతు తెలియజేస్తున్నాం. Thank you. Message from Lok Sabha, Secretary General. Sir, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha at its sitting held on the 12th August 2025 passed the Indian Ports Bill 2025. I lay a copy of the said bill on the table. Shri Bhuvneshwar Kalita ji. Thank you, Vice Chairman sir, for giving me the opportunity to speak few words on the sports bill. Our other speakers have spoken already about this National Sports Governance Bill in depth. I will only pick up few points and raise few points for the benefit of the Honorable Minister. As we all know, that India is a young nation. 65% of our population is below 35 years of age. So, sports and youth welfare is one of the very important component of our society, and very rightly, our Honorable Prime Minister has given importance to this sector of the society. The Modi government has prioritized sports and youth affairs, boosting the ecosystem with comprehensive support. The budget allocation for the Ministry of Youth Affairs and Sports has been a significant rise from 1,219 crore in 2013 to 2013-14 to 3,794 crore in 2025-26, marking a rise of 211.2%. So, a major portion of that is 2,191 crore has been allocated to central sector schemes, with the flagship Khelo India program receiving 1,000 crore, with increased investment, strategic planning, and world-class talent. India's sporting transformation under the dynamic leadership of Narendra Modi is no longer a vision but a unfolding reality. As the country eyes on the 236 Olympics, its journey towards becoming a top 10 sporting nation firmly on track. So, if India has to become a developed country by 2047, we have to develop in all areas of the society, in all areas of all sectors of the nation. Sports is an important sector, because without being in the top 10 or top 3 in Olympics or any other games, you cannot say yourself that you are developed in sports. So this bill, the National Sports Governance Bill 2025, is an important step towards that. I'll only say one or two more words on this. Sir, the visionary policies of the Modi government has undertaken strategic shift to transform sports from recreational activity into a professionalized sector, will have to moving beyond a past era of limited institutional support. This transformation is spearheaded by the Khelo India program, which focuses on developing infrastructure and fostering a national sports culture. Further, to counter doping, whose root cause is low level of awareness among athletes, presents a major obstacle to fair competition. Khelo Bharat Niti 2025 was introduced as an educational policy designed to inform future athletes
about doping risks and prevent inadvertent doping. The policy is complemented by legislative effort through this 2025 bill, which will provide robust legal framework to support the anti-doping initiatives. Sir, Thank you. There is a case I want to exemplify We'll have to here, wrap up. because You're aware time is it is up. not the allopathic medicines alone which the athletes take. They take Ayurvedic medicines also. Thank you. Because it depends on the coach. In coaching, Yep. if the coach gives a proper medicine which doesn't amount to doping, the doping will reduce. So it is very important that in coaching and the coaches, the awareness should be Thank you. made, and the awareness will be automatically made to the athletes. Thank you very much. Thank you. Thank you. श्रीमती सीमा द्विवेदी जी। उपसभापति महोदय, आज आपने राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति बहुत आभारी हूं। महोदय, यह विधेयक महिलाओं के सम्मान का विधेयक है, महिलाओं को आगे बराबरी करने का विधेयक है और युवाओं के उत्थान का विधेयक है। महोदय, खेल एक ऐसी चीज है जिसके माध्यम से हम अपने व्यक्तिगत प्रयास को दिखाने का काम करते हैं। खेल का प्रांगण चाहे कोई भी खेल हो, वहां पर जब खिलाड़ी खेलता है, जब कोई हमारा प्लेयर खेलता है, तो वहां पर उसकी अपनी व्यक्तिगत प्रतिभा दिखती है कि फला की प्रतिभा क्या है। मैं बहुत आभारी हूं श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी के प्रति, जिन्होंने खेल का बजट दूना किया। माननीय मंत्री जी के बहुत आभारी हूं, उनके प्रति मेरा बहुत आभार है कि आपने खेल जगत में कुछ नया करने के बारे में सोचा। आज महोदय, मैं ये आपके सामने कहना चाहूंगी कि जो हमारा खेल विधेयक है, ये बहुत सारी खामियों को दूर करने वाला विधेयक है। आपको याद होगा, जब राष्ट्रमंडल खेल घोटाला हुआ था, इनके चेयरमैन सुरेश कलमाडी जी थे। आज मेरे सामने के साथी नहीं बैठे यहाँ पर, अगर वो होते तो मैं इसके बारे में विस्तार से चर्चा करती। 2014 के बाद लगातार खेलों के बारे में हमारे प्रधानमंत्री जी ने सोचा, और ये सोच ऊपर से नहीं बल्कि गांव से लेकर के आए। गांव से खिलाड़ी को कैसे पैदा किया जाए, उनका कैसे उत्थान किया जाए। इन 2014 से लेकर के आज 2025 तक किसी प्रकार का कोई घोटाला न होने के बावजूद भी आज जब ओलंपिक में चाहे कोई भी जब हमको मेडल प्राप्त होता है, उसमें भारत का स्थान बड़े अच्छे शब्दों में पाया जाता है। पहले मैं पीटी उषा जी यहाँ पर बैठी, ये इनको हम लोग उड़न परी कहा करते थे, और पीटी उषा जी का चयन राज्यसभा में इस बात को दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी ने खेलों के बारे में कितनी उनकी बड़ी कल्पना है। वो चाहते हैं कि पीटी उषा जैसी हमारी बहुत सी बेटियां इस खेल के मैदान में अपना आगे बढ़ें। महोदय, मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि जब आदमी मैदान में खेलने के लिए जाता है तो ये सोचता है कि हम अपने कितना अच्छा अपने को प्रदर्शन करके दिखाएं। लेकिन पहले क्या होता था महोदय, पहले क्या होता था, खेल में जो हमारे खिलाड़ी होते थे उनका चयन उनकी योग्यता के आधार पर नहीं होता था। खिलाड़ी का चयन उसकी योग्यता के आधार पर न होकर के उसका चयन सोर्स के आधार पर होता था। जब आप सोर्स से किसी चीज को लाओगे तो वो उतनी अच्छा रिस्पांस नहीं कर पाएगा जितना उसको करना चाहिए। महोदय, ये प्रश्न उठ सकता है कि ये खेल विधेयक है क्या। इस खेल विधेयक के बारे में बताना चाहती हूँ। यह खेल विधेयक खेल निकायों में निष्पक्ष, नैतिक और पारदर्शी कार्यान्वयन सुनिश्चित करता है। महोदय, खिलाड़ियों के अधिकारों का और कल्याण की रक्षा करता है। भारत में खेलों का संवर्धन और विकास करता है। खेलों में उत्पन्न विवादों और शिकायतों के समाधान के लिए स्पष्ट नियम निर्धारित करता है। और महोदय, भारतीय खेल प्रशासन को ओलंपिक और पैरालंपिक चार्टर जैसे वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाता है। महोदय, अब हम ये भी पूछ सकते हैं कि इस विधेयक की आवश्यकता क्या है। महोदय, इस विधेयक की आवश्यकता क्या मैं बताना चाहती हूँ। अत्यधिक अदालती मामले के बारे में 350 से अधिक अदालती मामले और NSF चुनाव पर लगातार रोक लगाए जाने के कारण खेल निकायों के सुचारू संचालन में समस्या उत्पन्न हो रही है। इसके लिए महोदय ये बहुत जरूरी था। और महोदय, NSF में पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले, खेल प्रसंगों और धनराशियों और पदों के दुरुपयोग,
एथलीटों के उत्पीड़न आज जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। महोदय, आखिरी बात मैं कहना चाहती हूँ, प्रशासन में महिलाओं का सीमित प्रतिनिधित्व, महिलाओं को निर्णय लेने का पर्याप्त अधिकार नहीं मिलता है, जबकि महिला एथलीटों की संख्या अब कुल एथलीटों की लगभग आधा है। महोदय, 1 मिनट का अगर समय और मिल जाता तो मैं कुछ और बात करना चाहती हूँ। महोदय, मैं अंत में यही कहना चाहूंगी, यह विधेयक का मैं बहुत समर्थन करती हूँ, महिला जगत की तरफ समर्थन करती हूँ। भारत देश एक युवाओं का देश है और युवाओं की तरफ से मैं समर्थन करती हूँ, और मैं इस बात का समर्थन इससे भी मैं करना चाहती हूँ, ये जो हमारा खेल विधेयक आया है, ये तमाम कमियों को दूर करने वाला विधेयक है। मैं इस विधेयक के माध्यम से श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहेंगे और माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे। थैंक यू। श्री धनंजय भीमराव महाडिक जी, 3 मिनट्स। धन्यवाद उपसभापति जी, आपने मुझे द नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025 और द नेशनल एंटी डोपिंग अमेंडमेंट बिल 2025 पर बोलने का मौका दिया। मैं हमारे विजनरी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का, हमारे खेल मंत्री मनसुख भाई मांडविया जी का और हमारे राज्य के खेल मंत्री रक्षा खड़से जी का अभिनंदन करता हूं कि ये विधेयक लेके आए हैं। सर, 2014 के बाद हमारे देश में खेल की स्थिति में बहुत सुधार आया है। हमारे प्रधानमंत्री जी के लीडरशिप में जो नीतियां बनी हैं, उससे निश्चित ही हमारे देश में ओलंपिक के मेडल्स तो बड़े हैं, लेकिन और व्यापक काम खिलाड़ियों के लिए करने की जरूरत है। इसके लिए ये विधेयक बहुत जरूरी है। सर, हमारे देश में सभी जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है वो फेडरेशन के माध्यम से होते हैं, और फेडरेशंस की राजनीति की वजह से जो कोर्ट मैटर्स चल रहे उसकी वजह से हमारे देश के खिलाड़ियों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था, और इसके लिए ये बिल बहुत जरूरी है। सर, इस बिल का सबसे महत्वपूर्ण अंग ये है कि इसमें राष्ट्रीय खेल बोर्ड का गठन किया गया है, नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड। अब आगे से ये बोर्ड तय करेगा कि फेडरेशन की जो मान्यता है वो इसी बोर्ड के माध्यम से फेडरेशन को मान्यता मिलेगी। ये फेडरेशन का जो चुनाव होगा उस पर भी ये देखरेख करने का काम ये नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड करेगा। इसमें धन का कोई अगर दुरुपयोग हो रहा है, कोई घोटाले हो रहे, तो उस पर भी नियंत्रण करना, उसका आचरण करना, उसकी जांच करना, ये भी काम ये नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड करेगा। एक आदर्श आचार संहिता लागू करने का काम ये बोर्ड के माध्यम से होगा, जिससे खिलाड़ियों का जो उत्पीड़न है उसमें कमी आएगी। सभापति जी, ये फेडरेशन जो बनते थे उसमें बहुत पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता था, लेकिन आगे चल के इसमें जो प्रतिनिधित्व होगा, उसकी जो फेडरेशन की कमेटी बनेगी, उसको डिसाइड करने का या उसका चुनाव कराने का काम भी ये बोर्ड करेगा। सर, सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि इसमें 2 खिलाड़ी आवश्यक है और 4 महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व आवश्यक है। ये बिल का सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। सर, इसके पहले कभी खिलाड़ी जिसने कभी हाथ में बैट नहीं पकड़ी वो क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन होता था, जो कभी ग्राउंड में नहीं गया वो कबड्डी का चेयरमैन होता था, जो कभी पानी में नहीं उतरा वो स्विमिंग का चेयरमैन बन जाता था। अभी आगे चल के इसका जो चयन होगा उसमें खिलाड़ियों का इसमें समर्थन रहेगा, महिलाओं शामिल होगी, और इससे जो कार्यकाल की और आयु की सीमा भी है ये भी तय की जाएगी। सर, ये अतीत से एक बड़ा बदलाव, और जहां खिलाड़ियां विशेषकर महिला और निर्णय प्रक्रिया में अक्सर महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उसमें इसकी मदद होगी। सर, आगे चल के जो मैटर्स प्रलंबित है, कोर्ट में मैटर्स है, उसके लिए भी अभी कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। ये बोर्ड के पास जो भी प्रलंबित ये कोर्ट की बातें हैं, वो अदालत की बातें हैं, वो अभी बोर्ड के पास जाएंगी और इसका निर्णय भी ये बोर्ड लेगा। विधायक राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण की स्थापना करता है, जिससे अध्यक्षता सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे, जिसकी वजह से इसमें बहुत बड़ी पारदर्शिता होगी और मुख्य न्यायाधीश करेंगे, और जिसका लंबित मामलों में त्वरित फैसले होने में मदद होगी। सर, ये चुनाव में पारदर्शिता भी लाएगी और इससे खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस पर भी असर होगा। सर, भारत की स्पोर्ट्स क्षेत्र में वैश्विक स्थिति को मजबूत करने के लिए बिल बहुत महत्वपूर्ण है। सर, मैं आधा मिनट लूंगा। सर, भारत में 2036 ओलंपिक की बोली लगाने के और अन्य बड़े आयोजनों की मेजबानी की तैयारी कर रहा है। इससे यह विधेयक हमारे खेल शासन को वैश्विक मानकों और ओलंपिक चार्टर के अनुरूप लाता है। सर, मैं समय समाप्त हो रहा है, मैं एक रिक्वेस्ट माननीय मंत्री जी को करना चाहूंगा। हमारे यहाँ पे खेलो इंडिया की जो योजना बनी थी, जिससे हजारों लाखों बच्चे
एक खेल क्षेत्र में आए। सामान्य परिवार से बच्चे आते हैं जिनको आर्थिक शक्ति नहीं होती है, लेकिन केंद्र सरकार के खेलो इंडिया की वजह से उनको अच्छी आर्थिक स्थिति बनती है, जिससे वजह से बच्चे और आकर्षित होते हैं। मैं माननीय मंत्री से आग्रह करूंगा कि इसको और कायम किया जाए, और साथ ही में जिसकी बात उन्होंने की कि खेलो भारत नीति जो ला रहे हैं उससे भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन और बदलाव क्षेत्र में आएगा। तो मैं पूरी तरह से ये दोनों बिलों का समर्थन करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू। श्रीमती माया नरोलिया जी। धन्यवाद उपसभापति महोदय जी, आपने इस महत्वपूर्ण बिल पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025 एवं राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2025, यह बिल खेल ढांचे को पारदर्शी, जवाबदेह और खिलाड़ी केंद्रित बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। मैं इस बिल का समर्थन करती हूं और इस विधेयक के माध्यम से ये समावेशी ये जो बिल है प्रत्येक राष्ट्रीय खेल फेडरेशन में, जिसमें बीसीसीआई भी शामिल है, 15 सदस्यीय कार्यकारी समिति में कम से कम 2 विशिष्ट खिलाड़ी और 4 महिला अनिवार्य होंगी। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत सराहना करती हूँ। कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है वही सूरमा इस जग में दुनिया में पूजा जाता है, दुनिया में पूजा जाता है। मैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय खेल मंत्री सम्माननीय मनसुख मांडविया जी के दूरदर्शी नेतृत्व की सराहना करती हूँ, जिन्होंने हितधारकों और वैश्विक मानकों के साथ विचार विमर्श कर इस खिलाड़ी केंद्रित विधेयक को तैयार किया। यह केवल एक कानून नहीं बल्कि प्रत्येक युवा खिलाड़ी के लिए एक वादा है, जो खेलो इंडिया जैसे कार्यक्रमों से प्रेरित होकर भारत को गौरवान्वित करेगा। यह विधेयक हमारी प्रमुख योजनाओं जैसे खेलो इंडिया, जो जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं को पोषित करता है, फिट इंडिया मूवमेंट जो राष्ट्रव्यापी फिटनेस को प्रोत्साहित करता है, और टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम TOPS जो वैश्विक मंच पर खिलाड़ियों को तैयार करता है, के साथ तालमेल बिठाता है। यह 2028 ओलंपिक में क्रिकेट की वापसी के लिए भी एक महत्वपूर्ण है, जिसमें BCCI को जवाबदेही के दायरे में लाया गया है। मैं इस विधेयक की प्रमुख विशेषताओं के कुछ संक्षिप्त पहलू यहाँ पर प्रस्तुत करूंगी। पहला, यह महत्वपूर्ण संस्थानों की स्थापना करता है। राष्ट्रीय खेल बोर्ड जो फेडरेशनों को पारदर्शिता के साथ नियंत्रित करेगा। राष्ट्रीय खेल अधिकरण NST जो एक प्रतिष्ठित न्यायाधीश के नेतृत्व में 350 से अधिक लंबित अदालती मामलों को शीघ्र हल करेगा, और राष्ट्रीय खेल निर्वाचन पैनल जो निष्पक्ष और समयबद्ध चुनाव सुनिश्चित करेगा, जिससे पुराने नेतृत्व का एकाधिकार समाप्त होगा। मैं इस बिल के माध्यम से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूं, और हमारे खेल मंत्री जी मनसुख मांडविया जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन करती हूं, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण बिल जो बहुत समय से लंबित था, उसको इस सदन में लाकर लोकसभा में पारित करके और राज्यसभा में हमारा ये बिल पारित हो रहा है। मैं पुनः बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ और इस सदन से इस विधेयक को पारित करने की अपील करती हूँ, ताकि हम भारत को एक खेल महाशक्ति बनाने की दिशा में एकजुट हो सके। धन्यवाद। थैंक यू। डॉक्टर मनसुख मांडविया to reply the discussion. डेप्यूटी चेयरमैन सर, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल और नेशनल एंटी डोपिंग अमेंडमेंट बिल पर कुल मिला के 18 मेंबर ने चर्चा में भाग लिया, महत्वपूर्ण सुझाव भी दिया और अपना विषय भी रखा। उसके पहले जब हम बिल बना रहे थे, उस वक्त हमने देश के सभी स्पोर्ट्स फेडरेशन के साथ कंसल्टेशन करा, एथलीट के साथ कंसल्टेशन करा, कोच के साथ कंसल्टेशन करा। हमने सभी राज्य के साथ बातचीत करी। एक चिंतन शिविर में सभी राज्य के स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी थे, उसके साथ भी डिटेल डिस्कशन हुआ। उसके अलावा स्पोर्ट्स
अंतर्राष्ट्रीय सेक्टर भी है और इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल उसका एक चार्टर है, उसको अलाइन होना बहुत आवश्यक है। इसलिए इस बिल के लिए हमने इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल से भी बात करी, हमने भारत के ओलंपिक एसोसिएशन से भी बात करी, हमने फीफा फेडरेशन से भी बात करी, ताकि एक कॉम्प्रिहेंसिव और वर्ल्ड में बेस्ट जो 2-3 कंट्री का लो है इस टाइप का बिल तैयार करने के लिए हमने एक्सरसाइज करी थी। उसके अलावा हमने बिल को पब्लिक कंसल्टेशन में रखा, 600 से अधिक उसमें सुझाव आए। उसमें जो महत्वपूर्ण सुझाव था वो हमारे बिल को दुरुस्त करने के लिए उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। कुल मिला के ये स्पोर्ट्स बिल एक रोबस्ट बिल के रूप में आया, ताकि यहाँ सभी सम्मानीय सदस्यों ने इस बिल की सराहना भी करी और इस बिल के समर्थन में अपनी बात भी रखी। ये बिल से लद्दाख से लेके तमिलनाडु तक, गुजरात से लेके कोहिमा तक स्पोर्ट्स को ग्राउंड से ग्लोरी तक ले जाने का हमारा सपना अवश्य साकार होगा। यहाँ अच्छी तरह से बात रखी गई हमारे अयोध्या रामी रेड्डी जी ने कि हमारे देश में एक बहुत डाइवर्सिटी है। यहाँ हमारे ट्राइबल बच्चे हैं जिसमें क्षमता है, आर्चरी उसका नॉलेज है, आर्चरी उसकी टैलेंट है। ऐसे हमारे देश के ट्राइबल युवाओं को भी अपॉर्चुनिटी मिले। हमारे देश में 7,000 से अधिक किलोमीटर की कोस्टल लाइन है। स्विमिंग हमारे कोस्टल लाइन के यूथ में टैलेंट के रूप में है, उसका नेचर है, उसको भी अपॉर्चुनिटी मिले। हमारे देश की महिला हमारी बराबरी की संख्या में है और उसमें भी टैलेंट है, उसको भी आगे बढ़ने का अवसर मिले। आज हमारे विपक्ष के साथी इस बिल में पार्टिसिपेट करा होगा तो अच्छा होता, लेकिन जो लोग महिला की बात करते हैं, जो लोग ट्राइबल के लोगों की बात करते हैं, जो लोग मछुआरे की बात करते हैं, वो बात करते हैं, लेकिन इस बिल में जिसके हित में जिसको राइट मिले, जिसकी टैलेंट को अपॉर्चुनिटी मिले, उसके लिए इस बिल पर जब डिबेट हो रही है उस वक्त वो उपस्थित नहीं है। वो दुर्भाग्य की बात है। उन्होंने संचालित में भाग लेके अपना सुझाव दिया होता तो हमें अच्छा लगता। हमारे सुभाषिष खुटिया जी ने अपनी बात को रखते हुए कहा कि उसमें सरकार और पावर सेंट्रलाइज होगा, सरकार के पास होगा। डिप्टी चेयरमैन सर, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, ए बिल में हम ज्यादा पारदर्शिता ला रहे हैं। ए बिल में सरकार कोई पावर कैचअप करना नहीं चाहते हैं, सरकार कोई फेडरेशन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती है, सरकार कोई सिस्टम को नहीं कंट्रोल करना चाहती है। सभी में पारदर्शिता सुनिश्चित हो। ये पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए हम उसको सहयोगी होने की कोशिश करेंगे, उसके लिए हम स्ट्रक्चर देंगे, उसके लिए हम व्यवस्था देंगे, ताकि एक ट्रांसपेरेंट तरीके से हमारे एथलीट को अपॉर्चुनिटी मिले। हमारे पीटी उषा जी यहाँ उपस्थित है और उन्होंने अपनी जब बात कही तब उन्होंने कहा कि ओलंपिक्स में जब मैं खेली थी और उनके बाद मुझे लग रहा था कि हमारा सपना साकार नहीं हो रहा है, और अपना ऐसी कोई महिला उसका स्वप्न अंधेरे, उसका सपना डूबे नहीं, उसका स्वप्न साकार हो। जिन्होंने सपना सोचा हो, ऐसे सभी हमारे देश के यूथ को सपना को साकार करने की अपॉर्चुनिटी इस बिल से अवश्य मिलेगी। माननीय डिप्टी चेयरमैन सर, ये देश में स्पोर्ट्स कोई नई बात नहीं है। सदियों से देश में स्पोर्ट्स प्रचलित है। स्पोर्ट्स हमारा जीवन शैली है। और मैं तो कहूंगा कि हमारे यहाँ ऋग्वेद में आर्चरी और कुश्ती की बात कही है, यजुर्वेद में फिजिकल ट्रेनिंग की बात कही है, अथर्ववेद में हेल्थ, शरीर को समाज की बैकबोन माना गया है। मैं गुजरात से आता हूँ, गुजरात में धोलावीरा है। धोलावीरा में 10,000 लोग, एक आज से 5,000 साल पहले इंडस सिविलाइजेशन के सभ्यता का नगर है। आज वैसा ही वैसा वहां मिला है। ये नगर में 10,000 लोग एक साथ में इकट्ठा बैठ के खेल को देख सके, ऐसी व्यवस्था थी। वो बताते हैं कि हमारा रूट स्पोर्ट्स के साथ जुड़ा हुआ है और ये हमारे पास क्षमता है। सवाल इतना ही है कि उसको एक इकोसिस्टम देना, उसको अवसर देना। मोदी जी ने यही काम करा है और इसलिए खेलो इंडिया के द्वारा, फिट इंडिया के द्वारा हमारे देश में एक स्पोर्ट्स की इकोसिस्टम
इकोसिस्टम क्रिएट करने की कोशिश करी, उसका परिणाम आज हमारे सामने है। और यही प्रधानमंत्री जी है, केवल कहा नहीं है, करके दिखाया है। एक दशक पहले केवल देश में 1200 करोड़ का स्पोर्ट्स का बजट था। आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 4000 करोड़ से नजदीक का बजट से खर्च करके हमारे देश के युवा एथलीट को प्रोत्साहित कर रहे हैं। स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड के लिए केवल 28 करोड़ रुपया का खर्च करा जाता था, आज 187 करोड़ रुपया का खर्च स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के लिए करा जाता है। हमारे देश के एथलीट जिसमें टैलेंट है, कंपटीशन में जीते हैं, लेकिन इंटरनेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेशन करे, ऐसे एलिट एथलीट की सूची करके टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में उसको शामिल करके उसको हर तरह का एक्सपोजर मिले, उसके लिए सुनिश्चित करा जाता है कोई संसाधन की कमी ना हो। मेरे देश के ट्राइबल क्षेत्र से निकलने वाले युवा हो, एथलीट हो, उसकी क्षमता हो, लेकिन आर्थिक संसाधन नहीं है, तो मोदी जी ने कहा है कि आपको रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। 4000 से अधिक देश के एथलीट को आर्थिक संसाधन उपलब्ध करा के उसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में, नेशनल इंपोर्टेंट इंस्टीट्यूट में, स्टेट इंपोर्टेंट इंस्टीट्यूट में रख के उसकी व्यवस्था करी जा रही है। कैश अवार्ड के लिए हमारे देश के एथलीट भटकते रहते थे, अवार्ड के लिए एप्लीकेशन करते थे। अरे कोई एशियन गेम्स खेल के आ रहा है, हम सब लोगों ने देखा कि वो एशियन गेम जीते हैं, ओलंपिक्स गेम जीते हैं, कैसी एप्लीकेशन देनी है भाई? ऐसे खिलाड़ियों को यहाँ वो सरकारी कचहरी में धक्का लगाना पड़ता था, आज वो यहाँ लैंड होते हैं, तुरंत ही भारत सरकार के मंत्री उसको सम्मान पत्र देते हैं, उसको कैश अवार्ड देते हैं, कोई फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। इतना ही नहीं, मोदी जी ने कहा कि मेरे एथलीट, मैं देश का प्रधानमंत्री तो हूं ही हूं, लेकिन मैं मेरे एथलीट के मित्र हूं, और इसलिए हमारे पैरालंपिक्स गेम खेल के कोई आए, स्पेशल ओलंपिक गेम्स खेल के कोई हमारे एथलीट आए, और कोई ओलंपिक्स गेम्स खेल के हमारे एथलीट आए, प्रधानमंत्री जी स्वयं उसके साथ बातचीत करते हैं, उसके साथ मिलते हैं, 1 घंटे 1.5 घंटे उसके साथ खपाता है। ये देश के प्रधानमंत्री जी का कमिटमेंट है। और दोस्तों, खेलो इंडिया स्कीम अस्मिता लीग का प्रारंभ करा, देश के महिला स्पोर्ट्स में आगे आए। खेलो इंडिया अस्मिता लीग के द्वारा स्पेशल महिलाओं के लिए नेशनल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल की कंपटीशन हो। आज तक 1,31,000 महिला इस कंपटीशन में पार्टिसिपेशन कर चुकी है। उसमें से निकली हुई टैलेंट हमारी महिला नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में खेल रही है, हमारे लिए गौरव का विषय है। माननीय स्पीकर, माननीय डिप्टी चेयरमैन सर, मैं बताना चाहूंगा, ओलंपिक्स में देश की आजादी के बाद 1 दशक पहले यानी कि 2014 तक हमें 21 ओलंपिक्स मेडल मिले थे, और लास्ट 2 ओलंपिक्स में भारत को 15 मेडल मिले हैं। पैरालंपिक्स में हमें 8 मेडल मिले थे, लास्ट 2 पैरालंपिक्स में हमें 52 मेडल मिले। हम आगे बढ़ रहे हैं। एशियन गेम्स में हमें 57 मेडल मिलते थे, और लास्ट 2023 में एशियन गेम्स में हमें 107 मेडल हासिल करके हमारे युवाओं ने परफॉर्मेंस बताया है। पारा वर्ल्ड चैंपियनशिप में हमारा अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। हर सेक्टर में हम आगे बढ़ रहे हैं। स्पोर्ट्स सेक्टर बदल रहा है, स्पोर्ट्स सेक्टर आगे बढ़ रहा है, रिफॉर्म भी उसके साथ आगे बढ़ रहा है। यहाँ अच्छी बात हुई कि हमारे एथलीट की सिलेक्शन पारदर्शी होना चाहिए। हमने सुनिश्चित करा है कोई भी कंपटीशन के लिए, इंटरनेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेशन करने जाने के लिए, कोई भी कंपटीशन देश में आयोजित करी हो, एक कंपटीशन ऑन कैमरा हो, विथ ऑब्जर्वर हो, ओपन गेम्स हो, ओपन कंपटीशन विथ कैमरा विथ ऑब्जर्वर, ये ट्रेंड चालू करा है, ये सिस्टम बनाई है। देश में आज तक एथलीट की कोई रिपोजिटरी नहीं थी। नेशनल स्पोर्ट्स रिपोजिटरी सिस्टम में आज देश में 4 लाख से 25,000 हमारे देश के एथलीट का रजिस्ट्रेशन हुआ है। भाई चेयरमैन साहब, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है
क्योंकि कोई एथलीट है, उसका इतिहास चाहिए, वो क्या खेला है, कितना खेला है, कौन सा मेडल मिला है, कोई इंफॉर्मेशन नेशनल लेवल पर नहीं थी। आज देश के हर एथलीट जहां खेलते हैं वहां नेशनल स्पोर्ट्स रिपोजिटरी सिस्टम में उसका रजिस्ट्रेशन होगा और उसके आधार पर एक उसका सारा इतिहास, उसकी सारी इंफॉर्मेशन एक प्लेटफॉर्म पर रहेगी। हमारे देश में सभी पारदर्शिता के साथ खेले, उसके लिए सारी व्यवस्था को सुनिश्चित करने का काम करा। हमने खेलो भारत नीति के तहत देश में एक विजन दिया और ये विजन के आधार पर इस स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल का आपके सामने हम लाए हैं, जिसमें महिलाओं को अपॉर्चुनिटी मिले, जिसमें लीडरशिप रोल भी डिफाइन करा है। 70 साल की एज हमने सुनिश्चित करी है, लेकिन इंटरनेशनल फेडरेशन में हमारे देश के स्पोर्ट्स लीडर को अपॉर्चुनिटी मिले, इसके लिए इंटरनेशनल फेडरेशन में उसको काम करना है। वहां वो कोई पोजीशन पर है तो उनके लिए 70 साल की आयु लिमिटेड नहीं होगी, ताकि वो वहां लॉन्ग टाइम पर सर्वाइव करे और भारत का प्रतिनिधित्व करे। वैसे ही कोई भी फेडरेशन में 3 टर्म तक कोई भी व्यक्ति रहेगा, उसमें खास करके फेडरेशन के प्रेसिडेंट, ट्रेजरर, वाइस प्रेसिडेंट, उसके लिए 3 टर्म सुनिश्चित करी है। उसके बाद उसको कूलिंग करना आवश्यक हो जाता है और हमने सारे फेडरेशन को आरटीआई के रिजिम में भी लाया है, ताकि कोई भी एथलीट संबंधी इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसमें मिल सके। डिप्टी चेयरमैन सर, उसके साथ हमने नेशनल एंटी डोपिंग अमेंडमेंट बिल भी लाए। नेशनल एंटी डोपिंग अमेंडमेंट बिल यहाँ जो पारदर्शिता की बात करी, ज्यादा पारदर्शी करने के लिए, ज्यादा स्वायत्ता देने के लिए वो लाए हैं। हम यूनेस्को कन्वेंशन के सिग्नेटरी है, इसलिए इंटरनेशनल कन्वेंशन के साथ अलाइन करना, वाडा कोड के साथ हमारे देश के नाडा का नेशनल एंटी डोपिंग एक्ट को अलाइन करना यह आवश्यक होता है। समय समय पर बदलाते समय में, बदलाती परिस्थिति में वर्ल्ड एंटी डोपिंग कोड है, उसमें बदलाव होता है। ये बदलाव के आधार पर देश में भी बदलाव करने की आवश्यकता होती है। ये बदलाव करने के लिए, विशेष स्वायत्ता देने के लिए हम नेशनल एंटी डोपिंग बिल में अमेंडमेंट लेके आए हैं। सम्मानीय सदस्यों ने बहुत उत्साहपूर्वक उसमें भाग लिया, सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। साथ में जिन्होंने सुझाव दिया है उसका भी मैं अभिनंदन करता हूं, और जिन्होंने इस बिल पर अपना अपना इनपुट्स बाहर दिया है उसका भी मैं अभिनंदन करता हूं। और इस बिल पारित होने से देश में स्पोर्ट्स सेक्टर में एक नया युग की शुरुआत होगी। मैं सभी सम्मानीय सदस्यों को रिक्वेस्ट करूंगा कि सर्वसम्मति से दोनों बिल पारित करें और देश के स्पोर्ट्स सेक्टर को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद मंत्री जी। द क्वेश्चन इज द नेशनल स्पोर्ट गवर्नेंस बिल 2025 as passed by Lok Sabha to be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think ayes have it. Ayes have it. Ayes have it. The motion is adopted. We will now take up clause by clause consideration of the bill. Clause 2 stand part of the bill. There is one amendment. Number 8 by Sri Truchi Siva. Not present. I shall now put clause 2 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. The clause 2 is adopted. Clause 3 is stand part of the bill. Those in favor please say aye. Those against will please say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. The clause 3 is adopted. Clause 4 stand part of the bill. There is 4 amendments. Number 1 by Sri A. Rahim, not present. 9 to 10 by Sri Truchi Siva, not present. Number 13 by Dr. Fawzia Khan, not present. I shall now put clause 4 to vote. Those in favor please say aye. Those against will please say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. The clause 4 is adopted. Clause 5 stand part of the bill. There is 4 amendments. Number 2 by Sri A. Rahim, not present. Number 11 by Sri Truchi Siva, not present.
number 16 and 17 by Shri Santosh Kumar P. Not present. I shall now put clause 5 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. The clause 5 is adopted. Clause 6 to stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those again will please say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. The clause 6 to 10 are adopted. Clause 10 part of the bill. There is one amendment. Amendment number 3 by Shri A. Rahim. Not present. I shall now put clause 11 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. The clause 11 is adopted. Clause 12 is 10 part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. The clause 12 is adopted. Clause 13 is 10 part of the bill. There is one amendment. Number 4, Shri A. Rahim, not present. I shall now put clause 13 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. The clause 13 is adopted. Clause 14 and 15 is 10 part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. The clause 14 and 15 are adopted. There are two amendments for the insertion of new clause 15A. Number 14 by Dr. Fazia Khan, not present. Shri Santosh P. Shri P.P. Sundar, not present. I shall the clause 16 part of the bill. Those in favor please say aye. Those against will please say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. The clause 16 is adopted. Clause 17 part of the bill. There are two amendments. Number 12 by Shri Truchi Siva, not present. 19 by Shri Santosh Kumar P, not present. I shall now put clause 17 to vote. Those in favor please say aye. Those against will please say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. The clause 17 is adopted. Clause 18 to 26 is 10 part of the bill. Those in favor please say aye. Those against will please say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. The clause 18 to 26 are adopted. There is one amendment of our insertion of new clause 26A. Number 15 by Fazia Khan, not present. Clause 27 to 29 is 10 part of the bill. There is those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. Clause 27 to 29 are adopted. Clause 30 is 10 part of the bill. There is one amendment. Number 5, Shri A. Rahim, not present. I shall put now clause 30 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. The clause 30 is adopted. Clause 31 to 33 is 10 part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. The clause 31 to 33 are adopted. Clause 34 is 10 part of the bill. There is one amendment. Number 6, Shri A. Rahim, not present. I shall now put clause 34 to vote. Those in favor please say aye. Those against will please say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. The clause 34 is adopted. Clause 35 is 10 part of the bill. There is one amendment. Number 7 by Shri A. Rahim, not present. I shall now put clause 35 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. The clause 35 is adopted. Clause 36 to 38 stand part of the bill. Those in favor please say aye.
Those against will please say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. The clause 36 to 38 are adopted. The preamble clause 1, enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor, please say aye. Those against will please say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. The preamble clause 1 and enacting formula and the title are adopted. Dr. Monsoon Mandviya to move that the bill be passed. I move the bill pass. Bill be passed. Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. The bill is passed. I shall now put motion regarding consideration of the National Anti-Doping Amendment Bill 2025 to vote. The question is the National Anti-Doping Amendment Bill 2025 as passed by the Lok Sabha to be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up the clause by clause consideration of the bill. Clause 2 stand part of the bill. Those in favor please say aye. Those against will please say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. The clause 2 is adopted. Clause 3 stand part of the bill. There is one amendment. Number 4, Sri A. Rahim, not present. I shall now put clause 3 to vote. Those in favor please say aye. Those against will please say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. The clause 3 is adopted. Clause 4 stand part of the bill. Those in favor please say aye. Those against will please say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. The clause 4 is adopted. Clause 5 stand part of the bill. There is one amendment. Number 1, Sri Dr. V. Sivadasan, not present. I shall now put clause 5 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. The clause 5 is adopted. Clause 6 to 8 stand part of the bill. There is those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. Clause 6 to 8 are adopted. Clause 9 stand part of the bill. There is one amendment. Number 2 by Dr. Sivadasan, not present. I shall now put clause 9 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. The clause 9 is adopted. Clause 10 to 15 stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. The clause 10 to 15 are adopted. Clause 16 stands part of the bill. There is one amendment, number 3 by Sri Dr. Sivadasan, not present. I shall now put clause 16 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. Clause 16 is adopted. Clause 17 to 22 stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. Clause 17 to 22 are adopted. Clause 1 enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. Clause 1 and enacting formula, the title are adopted. Dr. Monsoon Mandviya to move that bill be passed. I move the bill be passed. Motion moved that bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. The bill is passed. Now we will take the Income Tax and the Taxation Law Amendment Bill
2025. Srimati Nirmala Sitharaman to move motion for consideration of the following bill: the Income Tax Bill 2025 and the Taxation Law Amendment Bill 2025. Should I move it first, sir? Yeah. Sir, with your permission, I rise to move that the bill to consolidate and amend the law relating to the income tax as passed by the Lok Sabha be taken into consideration. Motion. Should I say both or Both. The second is, sir, with your permission, I rise to move that the bill further to amend the Income Tax Act 1961 and to amend the Finance Act 2025 as passed by the Lok Sabha be taken into consideration. Motion moved. The Income Tax Bill 2025 and the Taxation Law Amendment Bill 2025 are now open for consideration, combined discussion. I now call upon the members whose names have been received for the participation in the discussion. Shri Naresh Bansal. धन्यवाद उपसभापति जी, आपने मुझे इनकम टैक्स अमेंडमेंट बिल पर और इनकम टैक्स प्लस फाइनेंस एक्ट अमेंडमेंट बिल पर बोलने का अवसर दिया। मैं अपने नेतृत्व का इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस पर अपने विचार रखने का अवसर दिया। उपसभापति जी, पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने ये करके दिखाया कि किस प्रकार से देश हित में चुनौतियों के बाद भी रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। हमने 1,500 से ऊपर पुराने कानूनों को समाप्त किया। देश की प्रगति के लिए 2047 के संकल्प को पूरा करने के लिए जो जो चुनौतियां आई उन सबको धीरे धीरे समाप्त करते जा रहे हैं। उसी में ये 1961 का इनकम टैक्स एक्ट भी, जिसमें आज संशोधन बिल लाया गया है, मैं इसके लिए माननीय मंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने व्यापार जगत में, आर्थिक जगत में इजी बिजनेस डूइंग की एक परंपरा खड़ी की है। पुराने कानून में जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 था, उपसभापति जी, 47 अध्याय और 819 धाराएं थी, जिसकी जगह अब 23 अध्याय और 536 धाराएं ही रह जाएंगी। डिजिटल टैक्स, विवाद निपटान और डाटा एनालिटिक्स में टैक्स बेस बढ़ाने जैसे प्रावधान किए गए हैं। नई कर व्यवस्था में बेसिक छूट सीमा 3 लाख की जगह 4 लाख होगी। सेक्शन 87A के तहत कर छूट की सीमा 25,000 से 60,000, 75,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ 12 लाख तक आय कर मुक्त है। इससे जहां इंडिविजुअल टैक्स पेयर को सुविधा होगी, वहीं व्यापार जगत में भी व्यापार में आसानी होगी। वित्त मंत्री जी ने जो नया आयकर कानून लाया है, उससे व्यापार करने में आसानी होगी, निवेश का नया और सरल रास्ता खुलेगा। आयकर मामले में सरकार सख्ती की जगह सहयोग बढ़ाने का इरादा रखती है। नए आयकर बिल की समीक्षा करने वाली परवर समिति ने अपनी 4,575 पन्ने की रिपोर्ट में 2,085 सिफारिशें की थी। हमारे लगभग सभी को इसमें स्वीकार कर दिया गया है। इस प्रकार व्यापक रूप से जनता का और विचारों को इसमें समावेश किया गया है। यह आर्थिक जगत में जहां 12 लाख रुपए तक का छूट मिली है, वहीं जिनकी और कोई आय नहीं है, केवल रेंटल इनकम है,
उनको तो 17 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं है। मैं रेखांकित करना चाहता हूं कि जो रिटायरमेंट की एज में होते हैं और आवश्यकता भी रहती है, अनेक प्रकार की छूट मिली है, लेकिन मेरा समय बहुत कम है। मैं इसके लिए आगे के अपने सारे विषय न बोलते हुए केवल इस बिल का व्यापक रूप से अपना हृदय के साथ समर्थन करता हूं, क्योंकि ये 2047 की चुनौतियों का एक रोड मैप है जो हमको विकसित भारत का संकल्प पूरा करना है, उसमें ये सहयोगी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नरेश जी। नेक्स्ट स्पीकर श्री एस निरंजन रेड्डी। Thank you, Vice Chairman, sir. Sir, I rise to support this bill because this amendment of Income Tax Act has been one of the most awaited pieces of legislation that the country has been waiting for, sir. Sir, in fact, we would illustratively refer to the complexity of Income Tax Act and the amendments that were made, which ran into Z, ZA, ZB, and we were all waiting to see that how a simplified legislation could be made to come over complex legislations like this. Sir, since I think I'm one of the first speakers to speak on this subject, if it has to go on record, sir, I find that the text in this particular act is reduced from 5.12 lakhs to 2.6 lakhs words, sir. The size has been halved. The act uses straightforward language. It uses short sentences, and sir, it uses the reference to many tables. It replaces a lot of provisos and explanations with subsections and clauses. And sir, most importantly, sir, it replaces the word previous year and assessment year with that simplified term like tax year, sir. Sir, this act also has a continuity with transition because it has taken care of all the amendments, including in the last finance bill act up till this particular enactment. And sir, it also retains a lot of judicially interpreted expressions. So this would mean that when this act starts, it would start on a foot of certainty because many of the expressions have already been interpreted. Sir, having said this, I must say 2 or 3 other things in relation to what I think the act has certain limitations in relation to what it seeks to achieve, and that is the nature of the enactment. So the act can only provide a scaffolding of a structure. So this is not an enactment for the purpose of enforcement which will have to happen through the officers enabled under the act. Sir, I find that one of the biggest challenges facing India is that we have a very minimal tax base. Sir, only 2.2% of the persons living in India are income taxpayers. So just for the people to have an idea, countries like France has 78% taxpayers, US has 48%, Germany has 61.3%. Sir, even by comparable standards, when we look at countries who are similarly placed along with us in BRICS, Brazil has 20% taxpayers, South Africa has 28% taxpayers, Malaysia has 22% taxpayers, a country like Indonesia also, sir, has 7.8% taxpayers. Sir, I think the act possibly will give an impetus to ensure that India somehow manages to ensure that more people become tax compliant and we have a larger base of taxpayers so that the burden does not fall harshly on this 1 or 2% of middle class or upper class people who are paying income tax. So the act may in future need to address the requirements of gig and platform workforce because this workforce, sir, is expected to reach a strength of 2.35 crores by 2030. Sir, we are on a process of formalizing the economy, the digital payments, the banking transactions that have increased, all of this, the GST reforms that have been brought, seem to show, sir, that India is moving towards this formalization of economy, but gig and platform workforce is going to be a large part of our system, sir. Sir, I have one other concern about the act now providing for the digital overreach and the erosion of privacy safeguards are some concerns that are being raised. So the bill adopts digital systems for assessments and appeals, which is welcome.
But clause 247 grants tax authorities sweeping surveillance powers. Sir, I understand where this is coming from, where we want to have more people come forward and pay taxes. We need to ensure that our officers are properly empowered. If people are not coming forward, we need to ensure that the officers have all means and measures for the purpose of ensuring that there is maximum tax compliance. But while providing for it, while enabling the officers, giving them a large liberty with regard to them dealing with the gadgets and the cloud storage space or social media accounts or any electronic data of citizens, while it may be for the purpose of enabling the tax enforcement officers to ensure that there is no tax evasion that happens, sir, there don't seem to be sufficient safeguards or guardrails with regard to ensuring that this thing is protected properly. It must be used only for income tax purposes. So maybe the department or the ministry may have to come up with circulars or guidelines with regard to how these provisions are going to be activated. Sir, then I have another suggestion for the Honorable Finance Minister. Sir, we may need to ensure that while we are ensuring that there is a greater compliance and we would work towards that, we may have to incentivize the honest taxpayers. So many years back, one of the first years, sir, I'm speaking from personal experience, when I paid my tax, I got a certificate of appreciation from Income Tax Department. Just one certificate of appreciation. Every time my chartered accountant would tell me, sir, we can save some money here or there, I would say, no, let us pay the tax. It is going for a good purpose. Sir, a large part of it was the fact that I felt appreciated. I felt my country cared that I paid income tax. Sir, we can come up with some schemes for the purpose of providing appreciation for our taxpayers. Sir, we could come up with one preferred taxpayer card or something, sir, where honest taxpayers who have been paying tax regularly over a period of time, they need to be recognized by the government. Maybe they need to have priority access at airports. They may need to have some priority access for public services. I want the government to show, sir, that people who are paying tax are appreciated and the government would actually recognize them. For a person to stand in a priority queue, sir, it is not that he wants to just jump the queue and move forward, but if any other person is going to an airport or a railway station and he sees there's the priority access for people who are paying income tax honestly, he would want to be in that queue because he would want to show to the world that he's an honest taxpayer. And the people who are in that queue will feel appreciated. It is not about them saving 5 minutes or 10 minutes, sir, but they feel their country cares for these honest taxpayers. Sir, any other schemes? This is just a suggestion that I'm making. The government could come up with many better suggestions. In fact, sir, I compliment the government that when this particular enactment was undertaken, there was a wide consultative exercise. Sir, they have sent this to a select committee. I compliment the Honorable Finance Minister for this exercise. Sir, I am only suggesting and requesting the Honorable Minister and the government that please come up with, because there are many things, sir, that I have seen that behaviorally, when we came up with the Swachh Bharat scheme, it was just the nudge from the government that resulted in many people adapting to it. So there was just one nudge when the government said, give up your subsidy on LPG. That was sufficient for people to give up LPG subsidies on their own. Sir, if there is a nudge from the government asking people, they are doing it. Now, I'm not saying that they're not doing it, but we might need something on the ground visible for people to understand that they are appreciated by the income tax and the government if they pay taxes. It may make more people move towards this tax compliance. Sir, I look at this as a first step of legislative simplification. Sir, I realize that income tax is something that we need iterations from time to time. Madam, you have been a part of the insolvency bankruptcy code. I keep referring to that example when I was speaking on the criminal law bills, madam, which said that there is an insolvency bankruptcy, sir, committee, which on a regular basis makes recommendations for amendments to that particular law. And the government has been very quick in making those amendments that has made IBC, that insolvency and bankruptcy code, very workable. I had made this suggestion, sir, when I spoke on the criminal law amendments, that we need to have a committee like that. I would only suggest that in relation to the income tax, if this is treated as the first step at simplification, I think the simplification does not end here. The simplification exercise needs to continue.
And when once Income Tax Act was for us an illustration of the complexity of law, sir, I look at this Income Tax Act of 2025 in future becoming an illustration of how laws can be simple, lucid, and short. I compliment the government. My party supports the bill entirely, sir. Thank you, sir. Thank you. The next speaker is Debashish Samanta Rai. Not present. Sri Sanjay Kumar Jha. I compliment the Finance Minister for bringing this bill. The 2025 Income Tax Bill modernized India's 1961 tax framework. Tax officials can now access digital device alongside traditional records, addressing litigation gaps. Salary earners up to 12.75 lakhs are tax exempt and can file simplified forms via Forms 26AS. Undisclosed income definition expand to include virtual digital assets. The faceless assessment system is strengthened, eliminating taxpayers' officials' interaction through technology and team-based evaluation with dynamic jurisdiction to reduce corruption. Dispute resolution panels must now provide detailed reasoning for decisions. Tax treaty interpretation is enhanced by allowing undefined terms to derive meanings from other federal legislation, improving clarity in international tax agreement. The bill primarily aimed to simplify the language and remove redundant provisions of the Income Tax Act 1961. The current Income Tax Act 1961 lacks specific provisions for digital devices, creating litigation disputes. The 2025 Income Tax Bill explicitly authorized tax officials to assess digital device alongside traditional paper records like accounts books and ledgers that contains income and expenditure information. Recent tax regime changes exempt salary earners up to 12.75 lakhs from tax liability. According to provisions of the bill, these individuals can submit a simplified claim form instead of full income tax returns. This process integrates with Form 26AS, which provides a comprehensive record of taxes deducted and collected at sources. The 1961 Income Tax Act defines undisclosed income in such cases as cash, gold, jewelry, and other valuables. The new income tax law, the new income tax bill broadens this definition to encompass virtual digital asset as well. Under the IT Act 1961, there is a provision for faceless tax information collection. This provision aimed to eliminate direct interaction between taxpayers and tax authorities by leveraging technology, reducing corruption, and optimizing administrative resources. It empowers the central government to establish a digital team-based system for collecting tax information with dynamic jurisdiction, ensuring transparency and efficiency while maintaining parliamentary oversight. Dispute resolution, the 1961 Act permits qualified taxpayers, including those in transfer pricing cases, non-resident and foreign companies, to submit a draft tax assessment to a dispute resolution panel for guidance. The draft will maintain this provision, but now requires the panel to provide detailed reasoning and determining factors with their decisions. The law enables the central government to create international agreement preventing double taxation. When treaty terms lacks definition in the agreement or act, the government provide meanings through notification. The bill adds that undefined terms may also derive meanings from other federal legislation. The act establishes anonymous information gathering and tax assessment procedures, which the bill preserves. Additionally, the bill grants the central government new powers to develop schemes aimed at improving operational efficiency, transparency, and accountability in tax administration. The bill pared down the number of words in the law to around 2.5 lakh to 2.59 lakhs from the 5.12 lakhs in the Income Tax 1961.
2,59,000 से 5,12,000 से 2.59 lakhs words, almost half हो गया. The number of sections 2 have been slashed to 536 from 819. In order to provide greater clarity, the new bill has increased the number of tables it incorporates. Conclude. 1 minute. Please. To 257 from 18, and number of formulate to 46 from 6. The above provision have enabled the consideration of escorted clauses and simplified the complex language of income tax principle. The IT bill seeks to Thank you, Sanjay ji. Just 1 minute. Ek minute. Thank you. Already Transform the act into concise, lucid, and accessible legal instrument, more so for the normal income taxpayer. One suggestion to ma'am, to finance minister, the definition of computer system is wide and also include virtual digital space. The above terminology in attempt to modernize tax enforcement. 1 minute. I'll call now. Next speaker. Suggestion is issuing clear SOPs guidelines in this regard and conducting regular sensitized training program in this regard would serve as a confidence, because if you teach the mobile or computer. Thank you, Sanjay. That is one suggestion. Thank you. Next speaker, Sri Sanjay Seth. धन्यवाद सर. सबसे पहले मैं इस ऐतिहासिक सुधार के लिए माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देता हूं और माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को धन्यवाद देता हूं. यह बिल विकसित भारत के संकल्प की दिशा को पूरा करने के लिए एक मजबूत कदम है. इस इनकम टैक्स के बिल के लिए बहुत लोगों ने सब कुछ बताया है. मैं इससे पहले अपना अभी कुछ दिनों पहले जो अमेरिका के राष्ट्रपति ने हमारे भारत को डेड इकोनॉमी बताया है और जिसको कि हमारे लोकसभा के एलओपी ने भी समर्थन किया है, उसके बारे में उनको जानकारी देना चाहता हूं, पूरे विश्व को जानकारी देना चाहता हूं, क्योंकि जो हमारे आंकड़े हैं वो झूठ नहीं बोलते हैं. 2024-25 में भारत की जीडीपी का ग्रोथ रेट 6.5 रहा, जो G20 इकोनॉमी में सबसे ऊपर है. मई 2025 में इन्फ्लेशन रेट गिरकर 2.82% आ गया, जो 2019 के बाद सबसे निचला स्तर है. टोटल एक्सपोर्ट्स 2024-25 में रिकॉर्ड 824.9 बिलियन पर पहुंचा है. भारत की नॉमिनल जीडीपी 106.57 लाख करोड़ 2014-15 से बढ़कर 331.03 लाख करोड़ 2024-25 में हो गई है. परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से हम 14.59 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी के साथ तीसरे नंबर पर हैं. भारत की अर्थव्यवस्था हर साल औसतन 6 से 8% की रफ्तार से आगे बढ़ने का अनुमान है और अगले 15 साल में औसत लगभग 7% रह जाएगी. वहीं अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वो औसतन 2% की दर से बढ़ने का अनुमान है, जो पिछले 15 सालों की उसकी रफ्तार बराबर चल रही है. आज हमारी अर्थव्यवस्था विश्व में 5वें नंबर पे है और 2027 तक हमने संकल्प लिया है कि हम इसको तीसरी अर्थव्यवस्था बनाएंगे. 2014 में डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन हमारा 6.3 लाख करोड़ था, जो अब बढ़कर 19.60 लाख करोड़ हो गया है और इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो मध्यम वर्ग और नौकरी पेशा करने वाले लोग कर रहे हैं. उपसभापति महोदय, 1961 के बाद हमारे पुराने आयकर कानून के पहली बार डायरेक्ट टैक्स सिस्टम की व्यापकता और आधुनिक दृष्टि से नया रूप दिया जा रहा है. हमारी सरकार का उद्देश्य स्पष्ट है: भाषा को सरल करना, अनावश्यक प्रावधानों को हटाना, प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाना और हर नागरिक के लिए कानून को सुलभ करना. इस बिल के द्वारा 536 सेक्शन हटाकर करके 16 शेड्यूल में व्यवस्थित किया गया है.
ताकि एक आम आदमी को इसे आसानी से समझ सके। ये इस बिल में मेरा समय खत्म हो रहा है, इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और मैं फिर से माननीय प्रधानमंत्री जी और निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। नेक्स्ट स्पीकर श्री G.K. Vasan. Sir, the IT bill has been introduced in the parliament to ease compliance burden, sir. Sir, this is a bill, a reform to promote a transparent tax system in the nation, sir. Flexibility has been provided in the new IT bill for allowing refund claims in the cases where if the IT return is not filled on time. Sir, this is a big boon, a major relief to the taxpayers. Unfortunately, sir, such an important bill, sir, today we find that there is nobody in the treasury benches, sir. Such a relief to the taxpayers, treasury benches are not bothered about it, sir. They should have been here in this bill to discuss, deliberate, and debate, sir. Unfortunately, sir, they do not bother about the taxpayers of this country, sir. I am sure the taxpayers will be aware of the opposition parties, sir. Likewise, sir, the previous bill was on sports. For students in the school and college, sir, sports is a very favorite subject. They are not bothered about students in the school and college, sir. I am sure parents of this country, students in the college and school, and people who are interested in the sports will know the real face of the opposition today, sir. Coming to the bill, sir, the original bill raised concerns on house property taxation, pension deduction, and also for renewal for demand filing. The revised bill has addressed these gaps to fulfill, reduce disputes, simplify interpretation, which will pave a way forward for fairness, sir. Sir, in this bill, reforms are expected to ease compliance for individual companies, especially, sir, MSMEs, and promote a stable, predictable, and transparent tax system, which will pave way for a key factor for sustaining domestic consumption, attracting foreign investments, which will lead to support for growth, sir. Sir, this important bill has opted for simplified language to make the law more accessible and has removed absolute and redundant provisions for greater clarity in the bill, sir. To conclude, sir, the FM's legislation displays the forwardness, that is the clarity of our tax administration. This kind of base in the tax system, sir, will support our economic growth in the country, sir. With these words, my party, Tamil Maanila Congress Bhupanar, supports the IT Bill 2025. Thank you, sir. Message from Lok Sabha. Secretary General. Sir, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha at its sitting held on the 12th August 2025 passed the Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2025. I lay a copy of the said bill on the table. Next is Speaker Dr. Bhagwat Kara. माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्यगण, आज मुझे इनकम टैक्स बिल 2025 के ऊपर बोलने के लिए अवसर दिया, इसलिए मैं आपका और हमारे हाउस लीडर माननीय जेपी नड्डा जी का आभार व्यक्त करता हूं। आज भारत देश की इकोनॉमी पूरे दुनिया में चौथी नंबर पे है और जल्दी ही माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी इकोनॉमी बनेगी। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जैसे तीसरी इकोनॉमी बनने वाली है, वैसे ही हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मैडम की पॉलिसी भी महत्वपूर्ण है। इस बिल जो इनकम टैक्स एक्ट 1971 को रिप्लेस करेगा, ये जो एक्ट है 64 साल पुराना एक्ट है। इसमें अमेंडमेंट्स बहुत सारे हुए थे और लैंग्वेज भी बहुत सारी कॉम्प्लेक्स हुई थी, इसीलिए
टैक्स पेयर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स और प्रैक्टिशनर्स उन्होंने कंसर्न रेज करने के बाद यह जो बिल है 13 फरवरी 2025 को लोकसभा में लाया था और उसी वक्त वो सिलेक्ट कमेटी को रेफर किया था। सिलेक्ट कमेटी के जो कुछ रिकमेंडेशंस है वो लेने के बाद 21 जुलाई को वापिस लोकसभा में आया और उनके बाद अभी अलग अलग स्टेक होल्डर्स हो और उन्हीं का ओपिनियन लेके अभी आज अपने सामने बिल आया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जन भागीदारी को बहुत ही इम्पोर्टेंट दिया जाता है। कोई भी स्कीम यशस्वी करना है तो जन भागीदारी होना जरूरी है। इसीलिए इस बिल को फाइनल करते समय टैक्स पेयर्स हो, इंडस्ट्री का हो, प्रोफेशनल एसोसिएट्स हो, फील्ड लेवल ऑफिसर्स हो का ओपिनियन लिया है। इतना ही नहीं तो यह बिल बनाते समय दूसरे देश में इनकम टैक्स एक्ट कैसा है इसी के ऊपर भी प्रावधान लिया है। इसमें करते समय मोर देन 60,000 आवर्स डेडिकेट किया है और ये बिल बहुत ही सिंपल और लीगल लैंग्वेज में बनाया है। जैसे पूर्व वक्ता ने बताया कि पहला जो इनकम टैक्स एक्ट है उसमें 47 चैप्टर्स थे। इस बिल में सिर्फ 23 है। सेक्शंस 819 थे, अभी 536 है और वर्ड्स अगर देखे 5.12 लाख से सिर्फ 2.60 लाख वर्ड्स है। यह बिल महत्वपूर्ण है। जैसा हम देखें कि हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, इकोनॉमी बढ़ते समय डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस में जो रिफॉर्म्स हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मैडम के मार्गदर्शन में आए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम देखें तो इसी का इम्पैक्ट अगर हम देखें तो इनकम टैक्स रिटर्न्स 141% से वृद्धि हुई है। 2013-14 में सिर्फ 3.8 करोड़ इनकम टैक्स पेयर थे। 2024-25 में 9.19 करोड़ इनकम टैक्स पेयर हुए हैं। अगर हम रेवेन्यू देखें तो 2013-14 में 7,21,000 रेवेन्यू था, अभी 27 लाख से भी रेवेन्यू बढ़ चुका है। मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि हमारा जो संकल्प है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नया विकसित भारत बनाने का जो संकल्प है, तो नया नीति, नया इनकम टैक्स और एक्ट और हम इनकम टैक्स के साथ हमारा भारत एक विकसित राष्ट्र बनेगा। इन संकल्प के साथ मैं मेरे वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। नेक्स्ट स्पीकर श्री मस्तान राव यादव बीडा। Thank you, sir. Thank you for giving me the opportunity. I, on behalf of our Telugu Desam party and our leader, Sri Nara Chandrababu Naidu Garu, rise to speak on the bill, Income Tax Bill 2025 and Taxation Laws Amendment Bill 2025. The new Income Tax Bill is a piece of legislation that marks a turning point in India's direct tax history. This bill is not merely a replacement of Income Tax Act 1961. It is the result of over a decade of reforms aimed at making our tax system simpler, fairer, and more predictable. When NDA government came to power in 2014, we inherited a tax system weighed down by complexity, delays, and mistrust. Over the last 11 years, under the leadership of our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji and our Honorable Finance Minister Srimati Nirmala Sitharaman ji, we have pursued a clear vision to create a tax administration that is seamless, painless, and faceless. Technology has been at the heart of this transformation. The results speak for themselves. The average ITR processing time has dropped from 93 days in 2013 to just 10 days in 2023-24, with nearly 25% processed in a single day. ITR filings, including updated returns, have risen by 141% from 3.8 crore in financial year 2013-14 to 9.19 crore in financial year 2024-25. Gross direct tax collections have increased by 274% from 7.21 lakh crore to 27.02 lakh crores in the same period, sir. From simplifying the tax structure to creating a conducive environment for voluntary compliance, the reforms implemented by the government over the last 11 years were done to make the tax process simple, efficient, and transparent. Key features of this bill, sir. The bill reflects the three guiding principles of any good legislation: trust, transparency, and simplification. Number one, a simpler tax regime.
The new bill removes redundant provisions, consolidates overlapping clauses, and introduces plain, clear definitions. Number 2, new tax regime under clause 2021. This regime sets out straightforward slab rates. Number 3, enhanced taxpayer services. A dedicated Directorate of Taxpayer Services now oversees grievances, redressal, and service delivery. Ensures that most grievances are resolved within 15 to 30 days. Number 4, explained reliefs and exemptions. Clear provisions for commuted pensions deductions, extending benefits to individuals outside the formal employment framework. Removal of alternative minimum tax for LLPs, lease compliance for charitable trust, relax. Please conclude. Okay. Number 5, modern dispute resolution. Sir, this legislation reflects the maturity of tax administration. It replaces complexity with clarity, confrontation with cooperation, and suspension with trust. With this, on behalf of Telugu Desam Party, we wholeheartedly support the income tax bill, and we compliment our Honorable Finance Minister, Sri Srimati Nirmala. Next speaker, Sri Mukaria Rambhai. Not present. श्री महेंद्र भट्ट। माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे देश की माननीय वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी द्वारा आयकर बिल 2025 के समर्थन में बोलने के लिए मुझे अवसर प्रदान किया है। भाजपा शासन के पिछले 11 वर्षों में अप्रत्यक्ष हो चाहे प्रत्यक्ष कर हो, दोनों क्षेत्रों में काफी सुधार किए गए हैं और ये सुधार तब होते हैं जब नेतृत्व सुधार की दिशा में पहल करता है। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में बनाना है, विकसित राष्ट्र के रूप में देश को स्थापित करना है, उस दिशा में पहल है। आयकर अधिनियम 1961 की प्रतिस्थापित करने वाला यह आयकर विधेयक इस यात्रा में मील का पत्थर साबित होगा। महोदय, 2014 में सरकार बनने के बाद ईमानदारी से करदाताओं की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करने वाला ये विधेयक में ये प्रावधान किया गया है और ये कार्य लगातार चल रहे हैं। बीच के कालखंड में भारत की अर्थव्यवस्था लाइसेंस पर आधारित अर्थव्यवस्था रही। इस अवधि में कर प्रशासन भी अविश्वास और टकराव केंद्रित रहा, जो आज विश्वसनीय और पारदर्शी बनाने का प्रयास जारी है। उसी का परिणाम है महोदय कि आईटीआर की दाखिलें अब 141% बढ़ी हैं। इसी प्रकार सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 274% की वृद्धि हुई है। यह अपने आप में बहुत सराहनीय प्रयास है और मैं कह सकता हूं इस बिल के आने के बाद निश्चित रूप से इसमें और गुणात्मक वृद्धि होगी। महोदय, इस पहल से कर प्रशासन तेज, अधिक पारदर्शी, करदाताओं के अनुकूल डाटा का उपयोग, कर रिटर्न भरने का जो अधिकार दिया गया है उससे बहुत लाभ होने वाला है। सीपीसी ने औसत प्रोसेसिंग समय 2014 के 93 दिनों से घटाकर 10 दिन कर दिया गया है। इस अधिनियम के बाद कर प्रणाली अधिक न्याय संगत, सरल होगी। सुधार का उद्देश्य लोगों और व्यवसायों को स्थिरता का भरोसा दिलाएगा। आकलन में लगने वाला समय तथा पुनः खोलने में लगने वाला समय इसके अंतर्गत कम किया गया है। अपीलों की मौद्रिक सीमाएं बढ़ाकर अनावश्यक विवाद कम करने का इस विधेयक में प्रावधान किया गया है। व्यक्तियों के लिए कर युक्त आय 12 लाख तक बढ़ाई गई। स्लैब दरों का भी युक्तिकरण किया गया। ये एक सकारात्मक पहल था। महोदय, समय कम है इसलिए संक्षेप में विषय को रखूंगा। इसके अंतर्गत करदाताओं की सेवाएं अनुपालन में सुगमता हो, इसका प्रावधान किया गया है। शिकायतों का निवारण का तंत्र इसमें बहाल किया गया है। करदाता चार्टर स्थापित किया गया है। मैं सारे विषय की चर्चा संक्षेप में विषय को रख रहा हूं। कर ढांचे और आईटीआर का सरलीकरण का पूर्व वक्ताओं ने विषय रखा है। इसमें बहुत अच्छा एक प्रावधान किया गया है। नया कर शासन, उसकी कम दरें, सीमित कटौतियां और अनेकों प्रकार के इसके अंतर्गत सुविधाएं दी गई हैं। करदाता चार्टर की दृष्टि में कहूं 19 अगस्त 2020 को खत्म समय हो गया। जी विधिक रूप से अनुसूचित धारा 119A सेक्शन 1109A इनकम टैक्स एक्ट के तहत अनेकों प्रावधान इसमें किए गए हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा विधेयक जो लाया गया है
मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और यह विधेयक देश को विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने में सहायक सिद्ध होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी टू रिप्लाई द डिस्कशन। Thank you, Deputy Chairman, sir. So in the July 24 budget, a comprehensive review of the Income Tax Act was mentioned, and that announcement is the trigger which has led to reviewing the 1961 Income Tax Act, which, since its passing in 1961, has over the decades accumulated a lot of newer features, such as the TDS, the MAT, the transfer pricing rules, advanced pricing, which are several agreements, and several dispute resolution routes. So each of these have served a purpose, but have made the law itself very complex. So it was very tough to navigate for an ordinary citizen who's wanting to file his returns. But the largely dense and complex structure of that Income Tax 1961 Act resulted in various interpretations, and several avoidable disputes kept mounting. So not so much for the rate, but for the language of the Act, we were subject to too many litigations. So the density and the complexity of the Act and the verbose way in which the Act got written over the decades, with the different styles dominating it, made the Act very, very tedious for anyone to use. And in fact, many of the provisions of the Act reached the sunset clauses. So you were given a tax benefit for up to a certain number of years, and nearer the closure, some of them were not even reviewed. So the sunset clause existed, and at that time, more reviews had to happen, whether the sunset should continue or you should close it. These kind of things have also made it sound as though it has become outdated in parts, not the whole thing, but in some parts. Therefore, we needed a new law, and that is why in July 24 budget, I had announced that we'll come with a comprehensive review of Income Tax Act 1961 to make it concise, lucid, easy to read, and easy to understand. So that is the main objective with which we started this, sir. It was the review and the new income tax bill, which is now the subject of our discussion, were completed in record 6 months' time and introduced in the budget session of February 2025. This year budget session, we introduced it. The drafting of the new bill itself involved 75,000 person hours. That is the extent to which we... Manya Mantri ji, honorable members, it is now 6 p.m. If the House agrees, we will sit beyond 6 p.m. today till the disposal of the Income Tax Bill 2025 and Taxation Laws Amendment Bill 2025. Do I have the leave of the House to extend the sitting beyond 6 p.m.? Thank you. Honorable Minister. So, sir, the team of dedicated officers, I must appreciate the CBDT and also the Department of Revenue, who together did the drafting of the new bill, as I said, taking 75,000 person hours, with a team of dedicated officers. So the Income Tax Department worked very earnestly and repeatedly went through for any overlaps or errors in the language and kept itself constantly reviewing and correcting, reiterating, and so on. So before I get into the features of the bill, and I wouldn't take long to give the data,
this is a bill which is going to be very consequential. And Income Tax Act, every year, some amendment in the finance bill itself, we all pay a lot of attention, go into the details, what will it mean, what is the implication on me, how many people will end up paying more, paying less, what are the other provisions with which action will be taken on me, and so on. All of us are quite aware of that. So for even one little amendment to the Income Tax Act, there is so much attention given for the finance bill during the budget session every year. So this is a very consequential act in that we are changing the 1961 Act itself in a way, removing it and bringing a new act. We won't remove it in total because there will still be some cases or some incidents which relate to that period, and therefore that 61 Act will continue in some form only to the limited purpose of attending to those period relevant matters. So if this is the seriousness with which this country is looking at bringing a assessee-friendly, taxpayer-friendly act, replacing the 1961 Act, and it is a milestone which this country's financial system will face, I'm shocked that the opposition doesn't want to participate in it. And let me tell you, sir, initially, understanding the importance and the consequential nature of this, the opposition parties agreed in the Business Advisory Council, as you would, committee, Business Advisory Committee, that they will indeed participate in the Lok Sabha and also in the Rajya Sabha on this bill and debate it. And they were allotted 16 hours in Lok Sabha, 16 hours of debate in Rajya Sabha. Most often the opposition says, well, you don't want to discuss anything. We are asking for public, people's interest, public's interest. We want to have charcha on this matter. We agreed for 16 hours of charcha in Lok Sabha, 16 hours of charcha here. Okay, you had some protest, you want to march to the Election Commission, you went. But you came back, participate. You agreed to give 16 hours time for this discussion. Why are they away, sir, today? And when we talk about tax and tax-related matters, they will say, no, you're imposing tax burden on the people. Let me tell you, prior to COVID onwards, 2019 onwards, Prime Minister Modi has given clear instructions. COVID or no COVID, we shall not increase the tax burden on people. Not one paisa has been increased. And in fact, the new income tax scheme, which was brought in so that people who still want to enjoy the benefits of some kind of deductions can remain in the old scheme. But people who want to be paying less tax with or without deductions, we came up with a user-friendly new regime. And there, consequentially, every year we've been reducing both the rate and increasing widening the slabs, income slabs. This year, historically, as a big milestone, Prime Minister Modi said at least 12 lakhs tak, no tax should be paid by any Indian citizen, which means up to 1 lakh per month salary, no one will have to pay any tax. The structure was made simple, rates were reduced, rebates were given, so no tax for up to 12 lakhs income. And further, for others in a different income bracket, rates were reduced. So that is the way in which every budget we are making it easier for the taxpayer. Now, the point that I wanted to highlight is, if there's so much concern, and rightly as an opposition party, they should have the concern for taxpayers, that they should not be burdened. The rate was brought down till 12 lakhs in the budget, which was in the finance bill of February 2025. Now, as promised in the July budget 2024,
We are simplifying the whole tax law itself so that compliance will be easy. Even that is a very big step, as I said. And for that, when allocation of time also has been given, opposition is failing its duty in serving the people of India that they don't want to participate in this discussion, neither in Lok Sabha nor here. So, having said all this, I want to say, to remove any confusion in the minds of anybody, this amendment and bringing in a new law in the place of old 1961 aims at simplifying the language, the lucidity which is required for anyone to understand it, no anomalies or any overlapping language that leads to misinterpretations. So this aims at only that. There are no new rates being brought in here, no tax issues which are being brought in here. That will come every year as it does in the finance bill. This is purely for making the document simpler. And I must say, sir, like the way we've done today in the insolvency and the bankruptcy code, where we are bringing the next generation of IBC, bigger reform, that also has gone to the select committee. Lok Sabha has had that introduced today, and it has been sent to a select committee. Even this act, when it was introduced in February, in July itself, I did say that wide consultations will be held. This act, when it was brought in, was sent to a select committee. And I must thank and put on record my gratitude for the extensive work that that select committee in the chairmanship of Baijent Panda, MP from Lok Sabha, and his entire team, which consisted of members from all parties represented in the parliament. They all did extensive work. They consulted, they went around the country, they met with experts, domain experts, tax experts. They met with so many people and taken intensive inputs from these people. So the committee consisted of 31 members from across, as I said, from across the political spectrum. The committee held 36 meetings, engaging extensively with government officials, stakeholders, and experts, and received 334 memoranda containing a wealth of valuable inputs and suggestions. So the committee, if we did that many number of person hours, 75,000 person hours from the department, the committee had 36 meetings and took 334 memorandum from the public. Now, after all that, the select committee, in its report, which was submitted to the Lok Sabha Speaker, has put forward 566 recommendations. The intensity and the gravity of the work is what I want to highlight before you, Honorable Deputy Chairman, sir. Of these 566 recommendations, the committee itself agreed to department's view in response. The suggestions came, the department gave its response. The committee agreed for the department's view for about 370 cases. So 566 was the suggestion given. In 370 proposed cases, accepted the clause as was proposed in 370 cases. Further, sir, not going into too much details, but it is so important that I want to give a few information to you. Redundant provisions were removed. Archaic languages were also removed. We have reduced the number of sections which many honorable members spoke about. The total number of sections, sir, were 819 in the 1961 Act. 819 sections. They have now come down to 536 sections. Complete cutting down. And the number of chapters were 47 in the 1961 Act. We have cut it down to 23 only. The number of words, which again many members spoke about it, 5.12 lakh
words were there in the 1961 Act. It has been now brought down to 2.6, literally half the size of what it was. Also, sir, because we are talking of 21st century, people are very used to having a lot of graphs, pictorial depictions, tables and matrix given to them so that they can easily understand things. So people have got used to that. Normally, our laws don't have any of these. They go very staid in language, very staid in the way the language is used, and only text will follow further text. Whereas we thought, since we are working this century, we should have tables to make people understand how the law functions, where possible. And we're also showing through formulations as to how it will function. So for the first time in this Act, we have brought 39 new tables and 40 new formulae to replace textual narration. So when people see numbers, when they see comparisons, or when they see it laid out in a simpler format, it is easy for them. So we've adopted this novel method in a law, in an act which is going to be passed by the parliament, which normally doesn't happen. So the changes are not just merely superficial. They reflect a new simplified approach for tax administration. This learner more focused law is designed to make it easy to read, understand, and implement. So as we are going through this exercise, sir, the officers of the CBDT are actively engaged in redrafting the rules, the subordinate legislations, with the same objective of simplifying both the provisions and the associated forms. So when the law is simple, you're able to read it easily, no interpretation problem. But what happens to the assessee when he gets the form in front of him in the computer? Even that is being simplified. So as is said in the Act itself, if everything goes well and if we are able to pass it, and I'm sure there will be members watching it very cleanly, the systems, the computer systems which run our income tax will all have to be now rebooted for the newer law. Because the time is very short between now and 1st of April 2026. We need to have all the computers reset for the way in which this act has been subject to the approval of the parliament. And therefore, if from 1st April 2026 we want to effect this, it's greatly appreciated that the parliament has taken the initiative to pass it well in time, so that between September and 31st of March, we will get the systems also clear. And why do I say that? Because not only the computer systems will have to be kept ready for the assessee to file his own returns, but we are planning to issue a lot of SOPs and also frequently asked questions to be put up, so people understand what are the changes. If they go to the domain, they will get it from the income tax portal, all the details of what it is going to be like. Further, not so much getting into that detail, I just want to reassure that so much thought has gone into making this law. And it's not going to be confined to only what the law says. We also want to come up with some kind of a information memorandum, so that people who are dealing with the new act sometimes can get this thing, because you're so used to 1961 Act, which ran the country for 50 years. And suddenly you say, where was this? In that act, it used to be like this. Where is this here now? For that, a separate information memorandum will also be issued, so that people can refer that and then say, oh, then in this act, it will be here. Like that, so that it will be like a guidance material. Even that is being prepared. That's not part of what is being circulated in the parliament, but I just want to reassure, a lot of thought has gone into this. A lot of hard work has gone into it. More from the point of view of what will the taxpayer think about it, materials have been prepared. So that's about the income tax new act, replacing the 1961 Act, the Income Tax 2025 Act, if passed from the parliament. So that's about that one. The second, which you've allowed me to take up simultaneously, I'll just say a few words on that.
Sir, it is a taxation laws amendment bill, the second one. Normally, taxation amendments are done during the finance bill. But some extraordinary situations, we do come up with corrections. There are 4 things this time which we want to bring in here. We could have waited for the finance bill, but because the economy, people, everybody wants to have very quickly a look at how these are developing, we've just done 4 things. One is giving tax exemption on dividend interest and also long-term capital gains to sovereign wealth funds and pension funds investing in infrastructure between 1/4/2020 and 31/3/2030, subject to notification. The Public Investment Fund, which is, and its largely wholly owned subsidiaries, will be named directly in the section for exemption. PIF is from Saudi Arabia. So that fund is being, like the way we've given earlier for other sovereign funds. That is one. Second, abatement of all assessments for block periods in such cases until block assessment order, which will be a major reform and ease of doing business step. So they can treat the entire block, even in between one of the years there was a search, they didn't have to have confusion. Then there was this 75,000 rupees deduction, standard deduction offered for the income tax. People had a confusion saying, is this available for salaried people? What will happen? So we have given a clarification that. So hardly about 3 of them. And 4th is the unified pension related things where confusion on deduction, if there is a parity with NPS and so on. So for that, we've brought in 3 points, which will be part of the taxation law, which is here. So above 4 changes are, sir. This is a very important line. I want the honorable members to concentrate on this. The above 4 changes which are coming through this tax law amendment are for the Income Tax Act of 1961. We are talking about income tax bill, which is getting replaced because of language and other things and bringing 2025. But the old and the current prevailing act, 1961, requires these amendments. But these have also been, this is where I want the attention of the honorable members. So these amendments are coming into the 1961 acts. But these have also been incorporated in the new income tax bill also. So we need not worry about confusion. We have not overlooked any of this. So with these words, sir, I want to submit. Thank you very much for giving me this opportunity to explain. I request that the bill be returned. I shall now. So 1 minute. Yes, please. 1 or 2 members had raised. Yes. I just want to answer them. The first one is about a point which Niranjan Reddy ji, he is not here. Just call out. I just want to, YSRCP. So he had raised this point that there need to be sufficient safeguards, guardrails for protecting privacy in searches. I want to tell the members, sir, search provisions have been rationalized in this bill. These have been done to adequately cover the cases where there could be some technological challenges. However, I want to underline the fact that no new power has been given to the officials through this act. There is no new power assigned to the tax authorities. However, to allay the apprehensions, as I said earlier, to allay the apprehensions of honorable member and other taxpayers, CBDT will come out with a SOP as to how to deal with the personal information seized during searches. Because most often when searches happen, the computers are seized, people get panicky, they don't know what to do with it. So there will be an SOP issued for the assessee to know how to deal with such search-related matter. The second point that Niranjan Reddy ji had said, for some kind of appreciation of honest taxpayer, we also give certificates to honest regular taxpayers. I hope he's not missed out on that. I just want to inform him on that. So the other honorable member who spoke was Sanjay Kumar Jha, who had raised this issue of computer systems used in search provisions, saying that the definition is too wide. I just want to assure the member
that all of us would appreciate that the definition of computer system has to be wide enough, sir. Today, the computer systems are of so many different varieties. Technology is making it wider. Technology is changing it rapidly. So by keeping it wider, we are giving an option for the taxpayer also that your computer, your technology that you're using is also covered under the definition. Otherwise, normally what happens is they look at the narrow definition and say, hey, you can't touch my computer because this is not defined by you. So we've kept that wider. With fast changing technology, most of the data is now stored in sophisticated digital devices. Therefore, for access to such data, there have been some rationalization in the search provisions, particularly where there is a cooperation from taxpayers. Sometimes taxpayers don't cooperate. Recently, most of our honorable members would have read in the newspapers that when the search happened, when they went for doing the search, they completely refused to give access to the computers. They said, we don't have the password. And the password, according to them, is kept in the country from where they have come. So they're making money in this country. And when the wrongdoings are suspected, and when we go to search them, they refuse to give access to their computers. They refuse the password. So how do you at all do? But you're governed by the law of the land here. So such things happen when technology is actively used in running a business. So to allay the apprehensions again, CBDT will bring out detailed SOP for handling digital data. Thank you very much. Thank you. I shall now put the motion regarding consideration of the Income Tax Bill 2025 to vote. The question is that the Income Tax Bill 2025 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up clause by clause consideration of the bill. Clauses 2 to 246 stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clauses 2 to 246 are adopted. Clauses 247 stands part of the bill. There are 19 amendments. Number 1 to 19 by Dr. John Britas. Not present. I shall now put clause 247 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 247 is adopted. Clauses 248 to 536 and Schedule 1 to Schedule 16 stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clauses 248 to 536 and Schedule 1 to Schedule 16 are adopted. Clause 1, the enacting formula and the title stands part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 1, the enacting formula and the title are adopted. Srimati Nirmala Sitharaman ji to move that the bill be returned. Sir, I rise to move that the bill be returned. Motion moved that the bill be returned. The question is that the bill be returned. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is returned. I shall now put the motion regarding consideration of the Taxation Laws Amendment Bill 2025 to vote. The question is that the Taxation Laws Amendment Bill 2025 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up clause by clause consideration of the bill. Clauses 2 to 5 stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clauses 2 to 5 are adopted. Clause 1, the enacting formula and the title stands part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no.
I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 1, the inactive formula and the title are adopted. Srimati Nirmala Sitharamanji to move that the bill be returned. Sir, I rise to move that the bill be returned. Motion moved that the bill be returned. The question is that the bill be returned. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is returned. Honorable members, the House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Monday, the 18th August 2025.